course organized by Department of Biotechnology, Ghasidas, Vishwavidyalaya, Chhattisgarh. It is a privilege to welcome today Dr. Vishwavidyalaya and Dr. Santosh Kumar from NCCS and Dr. Rupesh Kumar from AIMS, New Delhi. It's a privilege to welcome you, sir. Dr. Srivastava will be giving talks today, and it is a privilege to welcome. He is additional professor in Department of Biotechnology at AIMS, New Delhi. Dr. Srivastava is an acclaimed translational research whose expertise in cellular and molecular immunology has led to pioneering contributions in bone biology, immunology, and cancer research. Dr. Srivastava completed his PhD at NCCS Pune, laying the foundation for a career dedicated to unraveling cellular mechanisms at the interface of immune and bone systems. He furthered his training as a postdoc scientist at Columbia University Medical Center, New York, and at the Roswell Park Cancer Institute, Buffalo, USA, where he worked at the forefront of international biomedical research. His distinguished career includes teaching and research appointments as assistant professor of zoology at Hari Singh Gaur Central University, Sagar, research affiliate at Roswell Park Cancer Institute, New York, and a postdoc scientist at Columbia University. He has also contributed to national and global scientific organizations, serving on committees such as Indian Immunology Society, IIS, and promoting collaborative research in osteoimmunology. I request Professor Renu Bhatt ma'am to welcome him with a plant sapling. Thank you, ma'am. We are honored to have We are honored to have Dr. Srivastava join us today and invite him to the stage to share his insights and expertise with the GIAN course participants and faculty members. Very thank you to all of you, and especially to Dr. Santosh for inviting me here for this GIAN workshop. So, without wasting much time, we will start with this course. Do you have a pointer? ऊपर करने का. Okay, so this is I will be talking about, because as per the theme, how we can integrate your endocrinology and multi-omics for postmenopausal osteoporosis, and how we can develop a therapy for that. Interested on this AC or something? Yeah, fan if possible. Yeah. Nice. That's good. So I'm audible to all of you, or I can just basically I just घूमते फिरते रहता हूँ for example while teaching. So this is something very close to my heart, and we have been working on this from quite some time. So our lab is a Center for Excellence from ICMR, recently recognized for that last year. And so why osteoporosis? Because I wonder that somebody has already talked about this in your recent past. You have never heard about osteoporosis being led as a research any kind in the near past. So is it fine? Should I be in English or Hindi? Whatever you people prefer, I would be comfortable with that. It's not a problem. So maybe I can do both of it. That is fine. Okay. So osteoporosis is called as a silent killer. Why a silent killer? Because आपको पता नहीं चलेगा कि आपको osteoporosis है unless and until आपकी कोई हड्डी टूट जाए.
or you're getting a fracture. So that is the most problematic part of diagnosed with the osteoporosis, because आपको पता ही नहीं चलेगा that you are dealing with osteoporosis. And that's why it is called as a silent killer. And if you see here, the prevalence, if you see on an average, in Asia, if you see, or Eurasia, it's 21%. Means 21%, मतलब 20 लोग आपके will be affected with osteoporosis in their lifetime anyhow. And this is going to increase by more than 50% by 2050. That is within 25 years. This number is going to increase by 42 or 45%. So that is again going to be very huge. If you see other countries also, the prevalence is similar. And Africa, again, it is 26.9, highest. Australia is 8%. And this is a stat from International Osteoporosis Foundation that 1 in 2 females and 1 in 4 male will be affected by osteoporosis. So although I'm talking about majorly focusing on postmenopausal osteoporosis, it will also affect your males also. And so this is the problem, that 100 में से 50 women will be having a fracture or will be having an osteoporosis in their lifetime. So that is huge if we see with respect to other data. So this is very important. I think that is visible. So if you see in any hospital, so these data are from your Europe and your American countries only, because in India we don't consider osteoporosis as a emergency or a health problem till now. It is not on the government's list of problematic diseases till now, because we are still developing, we are not developed. But I will tell you the problems of that. So अगर कोई भी 100 hospitals, 100 किसी भी जनरल हॉस्पिटल में आप जाते हो, 100 बेड्स आर देयर, so you will be मतलब astonished to see कि 43%, मतलब 43 beds will be occupied with a osteoporosis related fracture. और आपको लगता था कि हार्ट डिजीज जो कि 25 लोग ही होंगे उस पे, हार्ट पे न्यूरोलॉजिकल 26, हार्ट 25, और कैंसर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंसर ब्रेस्ट कैंसर 6% सिर्फ. एंड मोस्ट ऑफ द फंडिंग इज बीन डाइवर्टेड टू कैंसर, जबकि सिर्फ 6 बेड उससे ऑक्यूपाइड होंगे. ठीक है, उसके बाद हो सकता है हार्ट या फिर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जो कि ऑल ऑफ देम आर मेकिंग 40%, 50% ओनली. लेकिन 43% बेड्स विल बी ऑक्यूपाइड विद एन ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड फ्रैक्चर, एंड स्टिल वी आर नॉट गिविंग इट द ड्यू इंपॉर्टेंस. हम उस पर ज़्यादा फंडिंग नहीं कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा हम डील नहीं कर रहे हैं. व्हाट, आई एम नॉट ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? नो. ओ, ये लगा तो है. अच्छा, ये ओके, नाउ आई एम ऑडिबल. ओके, चलिए तो ऐसे कर लेते हैं. सो इफ यू सी हियर, ये डेटा आपको क्लियर है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा दैट विल ओनली टेल यू की द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, why we are dealing with osteoporosis. So almost 70 fractures occurs every 60 seconds across the world. This data was earlier, so approximately 1 second में 3 fractures होते हैं, but it is coming 17 for every 60 seconds. Almost हर second एक fracture is being reported, being documented. And in India, if you see, it is not going to be the case, because most of the fractures are very fine fractures, and people, they don't know that they are having a fracture. जितने लोगों को बैक पेन है, सब फ्रैक्चर्स, माइक्रो फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, बट नोबडी इज गोइंग फॉर अ डेक्सा और एक्सरे में तो पता भी नहीं चलता है. सो यू आर नॉट एक्चुअली रिपोर्टिंग इट प्रॉपरली. सो दीज नंबर्स आर वेरी हाई. अब इंडिया में देखिए 18% प्रेवलेंस है इफ यू सी ऑल अक्रॉस इन एवरेज, एंड 2 in 5 women 40%, and men's are also 33% prone to your osteoporosis fractures. So fractures are different thing, osteoporosis is a different thing. You need to understand this. So fractures are due to osteoporosis. जो अगर आप accidental fractures छोड़ दीजिए, तो जितने भी fractures हैं, they are all your osteoporotic fractures. They are due to osteoporosis. Okay, so that is fine. So we need to look into this. And also, if you see, so this is how bone remodeling is there. Just coming back here again. So now coming, so how to study osteoporosis? Okay. What should be done? So you understand the importance of osteoporosis. So osteoporosis is related to your bone health. And if you see, bone health is very important, because without a bone, we cannot sit, we cannot stand, we cannot do anything. And bone is the major organ in a body. Structural integrity is the only function which we know is that of structural integrity. It protects the internal organs and it provides a structure to the body. लेकिन ऐसा नहीं है.
If you see from an endocrinology point of view, all your mineral homeostasis of calcium, phosphorus and other minerals mostly is being uh, in constant your flux with your bone, because these are the storehouse for your calcium and other minerals important. और बिना calcium के तो कोई भी intracellular signaling होने वाली है नहीं किसी भी सेल में. So these are the storehouse for extra calcium. Okay, plus these are saving you from your injury. They are helping you to move around, sit around, do whatever you want to do, exercise, playing and everything. And the importance is being only recognized when you break your bones, or you have a back pain, or you have a fracture, or nowadays sitting is also causing a lot of back pain, and that is directly linked to your microfracture. This is happening in your vertebral column or vertebrae. So what is actually, what is the science of it? So this is a process called as bone remodeling. Remodeling मतलब कि modeling है, हो रही है, बार बार हो रही है. Why so? Why it is a remodeling? Why it is not one at a time? एक बार हो गई और खत्म हो गई. Because bone is a very dynamic organ. So if you see, if you have 10% आपकी bone जो है ना हर year नहीं बनती है body में. Every year 10% bone is replaced and that is new. That is again an fact. So why this 10% of the bone is a very active organ? If you see कौन सा आपको body का organ है जिसकी 10% cells replace हो जा रही है हर बार? नहीं, heart की भी नहीं हो रही है, brain की हो ही नहीं सकती है, otherwise सारा memory loss हो जाएगा, 10% गायब हो गई तो, ठीक है. Skin also is not replaced at such a fast rate. Maybe only your intestinal epithelial lining are replaced at such high speed, and also maybe your immune cells. ये सारी cells अगर आप छोड़ दो, so it's the bone which has been replaced every 10% for every year. और peak bone mass is achieved, I think 20-25 years के आसपास peak bone mass आपका achieve हो जाता है. So if you see, there is a very important process of called as bone remodeling. If you see, so एक और important function है bone का कि that bone is having a bone marrow. Okay, bone marrow घर है stem cells का, hematopoietic stem cells का, MSCs का. MSC से दुनिया भर की सारी चीजें बनती हैं और hematopoietic stem cells हैं जिससे कि सारा आपका immune system and other cells are being formed. So technically speaking, आपके stem cells यहीं उनकी birth हो रही है और यहीं पे वो develop हो रहे हैं, सारा immune system आपका यहीं पे mature हो रहा है. It is a primary lymphoid organ. तो दो तरह के organs होते हैं अगर आपने immunology पढ़ी होगी. So एक primary और secondary है. Primary is where your immune cells are given birth. तो सारे T cells, सारे B cells, सारे macrophages, DC सबकी birth यहीं होती है. बाद में आपका T cells की ट्रेनिंग होने के लिए चली जाती है थाइमस में, जैसे आपका डिफेंस अकेडमीज होती हैं, एंट्रेंस NDA के थ्रू होता है. लेकिन जिसको कि अगर आपका OTA चेन्नई भेजते हैं आर्मी के लिए, नेवल के लिए अलग भेजते हैं, ठीक है, या 3 मिलिट्री अकेडमीज अक्रॉस इंडिया, तो वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं. ओके, सेकेंडरी हैं जो भी डिपोर्ट्स आपके हैं. सो देयर इज अ वेरी सिमिलरिटी बिटवीन योर इम्यून सिस्टम एंड योर डिफेंस फोर्सेस, बिकॉज दोनों का फंक्शन डिफेंस है, एक का कंट्री के लिए और दूसरा आपकी बॉडी के लिए. ओके, सो आप सोचो वाई देन बोन इज नॉट गिवन द ड्यू इंपॉर्टेंस, जब इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो जहाँ पे पूरा इम्यून सिस्टम आपका और स्टेम सेल्स आपकी रहते हैं. स्टेम सेल से यू कैन गिव फॉर्मेशन टू ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड दे आर लिविंग हियर. सोचो इंपॉर्टेंस ऑफ द बोन, बिकॉज इट इज वेरी हार्डली ट्रू कि दैट अगर इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आपकी बॉडी के दे आर लिविंग हियर, द इम्यून सिस्टम और स्टेम सेल्स, और वो आपस में इंटरेक्ट तो करते होंगे डेफिनेटली. आप भी एक घर में रहते हो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, सारे लोग एक दूसरे में बात तो करते होंगे और एक दूसरे को इफेक्ट करते होंगे, एक दूसरे का बिहेवियर, एक दूसरे का डेवलपमेंट. दिस इज द इंपॉर्टेंस दैट बोन सेल्स, दे the osteoclast, the osteoblasts, which are also there, they have a very active role in playing your remodeling or affecting the development of your immune cells, your stem cells. And also these stem cells on your immune cells then again have a effect on the development of bone. So this is what my lab studies. What is the interaction between these immune cells and your bone cells majorly. So if you see, this is the bone remodeling process. Your HSCs are there. They secrete various factors, most prominent of them being your macrophage colony stimulating factor, that is your MCSF. इसके presence में we have osteoclast precursors in the bone marrow, monocytes. So they undergo formation of precursors of osteoclast and they are then giving formation to your osteoclast. Osteoclast कितने लोगों ने नाम पहले सुना हुआ है? All of you? Okay, so these are your bone eating cells. ये bone को आपका eat करती हैं, इसको erode करती हैं, ठीक है? So just consider that
as an engineer who is breaking the bones, okay, छोटे छोटे वहाँ पे आपका ग्रूविंग करके डिसॉल्व करके मिनरल मैट्रिक्स को, so they are dissolving it and the new cells come in, that osteoblast, which are actually bone forming cells. So एक आपने देखा होगा किसी भी हाउस का कंस्ट्रक्शन होता है और उसकी रिपेयरिंग जब होनी होती है, क्रैक्स आ गए आपके वॉल्स में, तो जहाँ जहाँ क्रैक्स पड़ते हैं वहाँ पे ही आपका जो वर्कर्स होते हैं वहाँ पे आपका तोड़ते हैं पहले प्लास्टर, इफ यू हैव सीन दैट वेरी केयरफुली. सो वहाँ पे सीधे वहाँ पे पुट्टी नहीं लगा देते हैं. सो अगर आपको अच्छे से बनाना है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, देन दे पुट अप अ प्लास्टर होल. अगर आप सीधे वहाँ पे क्रैक्स में खाली फिल कर दो फेविकोल, तो दैट इज नॉट गोइंग टू लास्ट एंड दैट विल बी इरोडेड. सो दिस इज इंपॉर्टेंट ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट कि when we move, when we run, we have lot of micro fractures in our body, in the bones. Daily basis पे बहुत and number of micro fractures are there. Okay, and these micro fractures need to be repaired. Even we cannot see them with the help of your advanced imaging also. These are at a molecular levels. Okay, and these need to be taken care of on a routine and daily basis. So this is how these bones are eroded. उसको तोड़ते हैं, फिर ऑस्टियोक्लास्ट आपको उसको वहां पर जाके स्पेस बनाते हैं सो दैट अ न्यू प्लास्टर कैन बी फिल्ड अप विद द हेल्प ऑफ दीज ऑस्टियोब्लास्ट. ओके, सो ऑस्टियोब्लास्ट दे मेक अप योर बोन मिनरल मैट्रिक्स. तो उसको जाके प्लास्टरिंग करके अच्छे से सारा. सो दिस इज अ नॉर्मल रीमॉडलिंग प्रोसेस जो कि कंटिन्यूअसली चलती है 24/7. ओके, एंड डिपेंड्स कि इफ यू आर अ रनर, मैराथन रनर हो या नॉर्मली स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो आप जैसे जैसे रन करते हो तो यू हैव लॉट ऑफ forces at particular point. फिजिक्स पढ़ी है सबने 12th तक. सो यू हैव फोर्सेस एट पर्टिकुलर पॉइंट. तो जहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है वहाँ पे फ्रैक्चर्स ज़्यादा होते हैं. ज़्यादा फ्रैक्चर्स होते हैं, माइक्रो फ्रैक्चर्स, तो ज़्यादा बोन फॉर्मेशन वहाँ पे होता है, सो दैट और स्ट्रेंथन कर सके. इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, यहाँ पे और हमको सीमेंटिंग ज़्यादा करनी है. सो इफ मैराथन की जो बोन के अंदर का स्ट्रक्चर होता है दैट इज डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन हु इज लेइंग ऑन अ बेड इन अ कोमा दैट इज नॉट यूजिंग इट्स बोन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. जो कोमा में वो यूज नहीं कर सकते. और यू हैव अ वेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सिर्फ आप बैठे रहते हो. तो आप सोचो जो दौड़ रहा है, वर्क कर रहा है, वेट उठा रहा है, उसके फ्रैक्चर्स माइक्रो होते रहते हैं और दैट इज बिन रीफॉर्म्ड, उसकी बोन वेरी सॉलिड. और जो लोग बैठे हैं, यूज एंड डिसयूज थ्योरी यहाँ पे लगती है. यू आर नॉट यूजिंग योर बोन्स प्रॉपरली, योर बोन्स आर कमिंग फ्रेजाइल. सो क्या होगा अचानक से किसी एक दिन व्हेन यू आर पिकिंग अप अ वेरी हैवी वेट, आप 20 किलो का सामान पैक करके ट्रैवल करने के लिए चले और जैसे इसको उठाया यू डेवलप अ फ्रैक्चर. और जो आपको पता नहीं चलेगा, देन यू स्टार्ट गेटिंग अ बैक पेन. और मे बी बैक पे ज़्यादा इसलिए आता है बिकॉज वर्टिब्री आर स्मॉल, और इफ यू आर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, योर मसल्स अलोंग द वर्टिब्री आर नॉट स्ट्रॉन्ग टू बियर द वेट्स, सो दैट विल लीड टू वर्टिब्रीज के ऊपर फोर्स लगा और वो फ्रैक्चर्ड हो गई. और नीचे सबसे ज़्यादा वेट यहीं आता है बैक पे, एंड दैट विल लीड टू योर बैक पेन. So this is the first indication that you are having a very poor bone health if you are having a recurrent back pain. और आप डॉक्टर के पास जाते हो तो they just give you calcium and your maybe vitamin D, nothing else, plus physiotherapy. बैक की एक्सरसाइजेस आपको वो रिकमेंड करते हैं. बैक से एक्सरसाइज से बोन का कोई मतलब नहीं है. द ओनली पॉइंट इज दैट कि आपकी बैक की मसल स्ट्रांग हो जाएंगी, सो दे कैन बियर द वेट अलॉन्ग विद द वर्टिब्रल कॉलम. वो भी आपका वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू द मसल्स, सो दैट आपका बैक पे जो वर्टिब्रल कॉलम पे वेट है वो कम पड़े. सो दैट्स व्हाई यू आपको फटाफट आराम मिलता है हफ्ते भर बाद व्हेन वंस यू गो थ्रू अ फिजियोथेरेपी. बट बोन की कंडीशन अभी भी वही है, दे आर फ्रेजाइल. सो हाउ टू एनहांस दैट? सो द फर्स्ट थिंग इज डेफिनेटली अ गुड डाइट एंड अ गुड एक्सरसाइज, गुड स्लीप. जितनी भी आपकी डाइटरी रिकमेंडेशंस हैं, फिजियोलॉजिकल रिकमेंडेशंस हैं, दैट आर देयर इंटैक्ट, उसमें कोई चेंजेस नहीं है. So this is fine. So this remodeling is very important. और कभी फ्रैक्चर, जैसे ट्रॉमा में कोई फ्रैक्चर होता है, उसकी प्रोसेस इज डिफरेंट बिकॉज बोन्स पूरी ब्रेक हो जाती है. सो ये डेवलपिंग में हिप फ्रैक्चर और वर्टिब्रल कॉलम फ्रैक्चर. तो एक और प्रॉब्लम इसके साथ है, जो पेशेंट्स को हिप फ्रैक्चर होता है, they are going to die. 25% of them are going to die within 1 year. So it's very high mortality. Highest mortality if you see for any disease. Even if you have having a cancer, मे बी आपको 1 साल के अंदर तो 25% लोग शायद ही मरते होंगे. बट विद इन दिस, इफ यू आर हैविंग अ हिप फ्रैक्चर, द मोर्टैलिटी रेट इज 25% विद इन 1 ईयर. उसके साथ वो और बढ़ती जाती है. प्लस इफ यू आर डेवलपिंग वन फ्रैक्चर, देन द सब्सिक्वेंट फ्रैक्चर्स के रेट और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. एक फ्रैक्चर हुआ, आप मॉर्बिड हो गए,
या आपकी जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्शन हो गई, फिर आप दूसरे फ्रैक्चर्स के भी कॉजेज बढ़ जाते हैं। तो ये सारे फ्रैक्चर्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, दे आर मोस्टली फॉर योर 50+ और 60+ के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि तो हम लोग के बीच में तो ऐसा कोई है नहीं जिसको फ्रैक्चर्स है, तो ये डेटा आ कहाँ से रहा है। सो दीज डेटा आर मोस्टली फॉर योर विमेंस जो कि पोस्ट मेनोपॉजल है, मीन्स मेनोपॉज जो कि पहले 50s में आता था, आजकल 45 में भी शुरू हो जा रहा है, 40s में भी, अर्ली 40s में भी, ड्यू टू वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स, स्ट्रेस। सो मेनोपॉज मीन्स योर एस्ट्रोजन लेवल्स आपके धीरे धीरे डाउन होकर जीरो हो जाएंगे। ओके और ऐसा क्यों होगा? बिकॉज द ओवरीज विच द वुमेन्स हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ ओवा, ये आपको पता है, और वो हर महीने एक एक ओवा दोनों ओवरी से निकलता है। 28 दिन की साइकिल होती है, लेकिन आपके पास जो ओवा का रिजर्व्ड है वो कुछ ही थाउजेंड्स का है। तो वो आपका ऐसे है कि 50 साल तक ही हर महीने निकलने की कैपेसिटी है। अगर आप उसको एनवायरमेंटली इंड्यूस कर दो ज़्यादा, जैसे कि फाइटो एस्ट्रोजन्स होते हैं, आप और एस्ट्रोजन लेना शुरू कर दो एनवायरमेंट से, एडिशनल सोयाबीन में है, लॉट ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स दे हैव एस्ट्रोजन, जिसको कि हम फाइटो एस्ट्रोजन्स बोलते हैं। वो अननोइंगली आपकी बॉडी को, ये जो आपका प्लास्टिक्स है ना, बीपीए जो होता है, बीपीए फ्री जो लिखते हैं ना, बीपीए इज ऑल्सो एस्ट्रोजन, मिमिकिंग, उसका स्ट्रक्चर मिमिक्स एस्ट्रोजन। सो व्हाट हैपेंस, जब आप बीपीए प्लास्टिक यूज करते हो, हर चीज में प्लास्टिक है, दैट इज एक्चुअली फॉर द वुमेन्स एंड मेल्स ऑल्सो, दैट इज मिमिकिंग एस्ट्रोजन का हाई कंसंट्रेशन हो रहा है। High concentration of estrogen is also not good. Everything should be in balance. Higher concentration of estrogen is linked with enhanced ovulation or PCOS. Okay, endometriosis. So all of your reserve of your ova is gone. तो आपकी जो menstrual cycle है वो irregular हो जाएगी, पहले हो जाएगी, बाद में हो जाएगी, गैप हो जाएगा. So that will lead to your post menopause. Menopause जल्दी आ जाएगा, फिर आपका stop of estrogen. Males को खुश होने की जरूरत नहीं है, because रेशियो उतना ही है, मेनोपॉज हमारे अंदर नहीं है, बट विथ एज द डेटा इज सिमिलर। वहाँ पे 1-2 में है, यहाँ पे 3 में 1 है, तो वहाँ 2 में 1 है। प्लस 60 ईयर्स के बाद दोनों के रेट ऑफ बोन लॉस इज सेम। 50-55 तक ही विमेंस में ज़्यादा बोन लॉस होता है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एस्ट्रोजन, बट आफ्टर 60s ओल्ड एज में वो दोनों की रेट ऑफ बोन लॉस इज सेम, रेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज सेम, रेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ फ्रैक्चर्स इज ऑल्सो द सेम. So the women are definitely at higher risk in the younger ages, but males are not spared. That is also a truth. So these are the problems with your lot of estrogens which we are taking from the environment. So this what happens? All your stock is gone of your ova, and your estrogen levels are very high. आप अंदर बन भी नहीं रहा तो भी हम एस्ट्रोजन ले रहे हैं from outside. Okay. Now coming to the pathophysiology. So this is what happens. क्यों आखिर osteoporosis is of two kinds. If you see here, we have this primary means your natural loss of estrogen in case of your women's also and males also have estrogen, but androgens ज़्यादा होते हैं, but estrogens भी होते हैं. इन्फेक्शन या कोई भी इन्फ्लेमेशन, बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेशन होगा, चाहे वो इन्फ्लुएंजा से भी क्यों ना हो, कोविड, ठीक है, इन्फ्लेमेशन आप समझते हो ना, इन्फ्लेमेशन इज योर ड्यू टू योर हाइपर एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम. जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं, TNF अल्फा है, IL-6 है, ओके, IL-1 है, ओके, कोई भी तरह का इन्फ्लेमेशन अगर बॉडी में है, दैट इन्फ्लेमेशन विल लीड टू योर बोन लॉस, ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन्फ्लेमेशन ऑफ एनी काइंड कुड बी ऑल्सो अ मेजर ड्राइवर फॉर योर ऑस्टियोपोरोसिस एंड एनहांस्ड एज. सो एज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज एजिंग में क्या होता है, lot of things are there, lot of research is now being done on aging, that aging disease ही है bone, mental health, not only mental health, Alzheimer's हैं, ये सारे के सारे aging related geriatric conditions जिसको बोलते हैं, these are part of that, and each and every organ is aging, so you will develop lot of problems for each and every diabetes, liver and everything, your neurological cognition, everything will go down with your age. So these are all your primary osteoporosis because these are natural. These are going to happen. What happen अगर इस osteoporosis को हम secondarily किसी और चीजों से activate कर दे? So this is your comorbidities. If you are having diabetes, तो diabetes में high glucose हो जाता है. High glucose is another problem which enhances the osteoclastogenesis because you have lot of energy, lot of glucose, that will lead to enhanced mTOR activation. mTOR पता है? So that is signaling pathway PI3K AKT mTOR. mTOR is a energy sensor of the cell. Okay.
ज़्यादा पैसे होते हैं, ज़्यादा खर्च होते हैं। तो एमटोर आपका क्या होता है, इट्स अ रियोस्टैट, जो थर्मोस्टैट होता है टेम्परेचर सेंस करने के लिए एसी में, जैसे कम हुआ फिर वो ऑन हो गया। तो एमटोर इज अ सेंसर फॉर एटीपी। एटीपी कम है तो बनाओ, एटीपी ज़्यादा है तो बंद हो जाओ। तो ज़्यादा पैसा ज़्यादा खर्चा, ज़्यादा एटीपी ज़्यादा फंक्शंस। तो ऑस्टियोक्लास्ट के लिए क्या हो जाएगा वो फंक्शन, ईटिंग का, बोन को जल्दी जल्दी खाने का वो हो जाएगा। सो देर इज नथिंग टू कंट्रोल दैट। सो दैट इज हाउ योर डायबिटीज, इस तरह से हाई ग्लूकोज विल एनहांस योर बोन लॉस। अपार्ट फ्रॉम दैट, वट एवर मेडिकेशंस इज बीइंग टेकन फॉर डायबिटीज, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं, ठीक है, फॉर ऑटोइम्यून डायबिटीज में, क्योंकि ऑटोइम्यूनिटी को दूर करने के लिए स्टेरॉइड्स आर द ओनली ऑप्शन, बिकॉज वी डोंट हैव एनी थेरेपी। द मोमेंट यू स्टार्ट स्टेरॉइड्स, steroids are known to enhance osteoclastogenesis, वो अपने आप में बोन लॉस कराएंगे। सो दैट इज द कॉज फॉर योर सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। इसी तरह से आईबीडी, आपको पता है ना आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, कोलाइटिस, आईबीडी, ओके, एंड योर और क्या होता है, क्रॉन्स डिजीज, दीज आर ऑल योर इन्फ्लेमेशन ऑफ द गट ड्यू टू वेरियस, सीलियाक डिजीज जिसको बोलते हैं आपका, ग्लूटेन, एग, जिन लोगों को एलर्जी होती है। सो दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ योर इन्फ्लेमेशन इन द गट, एंड दैट अगेन उसमें भी हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। सो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग विच सजेस्ट दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन योर गट एंड बोन, गट एंड इम्यून सिस्टम, ओके। सो गट जो आपकी होती है स्टार्टिंग फ्रॉम योर माउथ टिल द एनस, ये पूरा आपका जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, दिस इज एन एरिया इक्वलेंट टू अ फुटबॉल फील्ड, मोर देन इक्वलेंट एरिया ऑफ फुटबॉल फील्ड स्टैंडर्ड, इतना सरफेस एरिया है इसका। सोचो इतना बड़ा सरफेस एरिया, और दैट इज डायरेक्टली एक्सपोज टू द एनवायरमेंट, मतलब पैथोजेंस वहां पे बैठे हुए हैं। आप जो डेली खाना खा रहे हो, यू आर टेकिंग अप द एयर इन द लंग्स, दैट एयर इज एक्चुअली फिल्ड अप ऑफ स्पोर्स ऑफ फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, माइकोप्लाज्मा, ब्ला ब्ला ब्ला। और जब खाना खा रहे हो, सोचो जब आप कच्चा कुछ खा रहे हो, दैट इज हैविंग लॉट ऑफ अदर नीमेटोड्स आल्सो होंगे उसमें, ये होंगे बहुत सारे प्लांट्स होंगे, एंड दे आर बीन ईटन अप डायरेक्टली। So it is our defense system, basically your HCl जो कि स्टमक में है, that will take care of, but वो स्टमक तक पहुंचेगा तब, स्टमक से पहले तक जो आपका है वहाँ पे भी they are exposed. So your body is being bombarded continuously with n number of pathogens, मतलब antigens. That means कि immune system को भी should be very active, because area बहुत बड़ा है। हमारी कितना एरिया है फुटबॉल फील्ड में, एक छोटा सा किनारे खड़े हो जाओ आप, गोलकीपर जब आपका होता है बड़े से फुटबॉल फील्ड में, और इतना बड़ा एरिया आपको कवर करना है डिफेंस के लिए। सोचो आप बीएसएफ को कहाँ कहाँ पे बॉर्डरिंग करनी पड़ेगी, ऑल अक्रॉस द बॉर्डर, स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात टिल योर म्यांमार का बॉर्डर तक। सो ह्यूज एरिया, दैट्स वाई हमारी अपनी भी डिफेंस फोर्सेस ने क्या किया हुआ, पूरे बॉडी में गट के चारों तरफ डिपोट्स बना दिए हैं, लिम्फ नोड्स, दे आर कॉल्ड एज अ गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज, जिसको कि गाल्ट बोलते हैं, माल्ट भी बोलते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज। पेस पैचेस होते हैं जगह जगह पे इंटेस्टाइन के चारों ओर। तो ये रीजनल आपके आर्मी डिपोट्स होते हैं, जहाँ पे आपका टी सेल्स, बी सेल्स, डीसीज रहती हैं। कोई भी इमरजेंसी आएगी तो हम बोन मैरो से निकाल करके या ब्लड से निकाल करके नहीं बुलाएंगे। तो आपने जब भी देखा होगा व्हेन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ वॉर, पहले आर्मी का मूवमेंट होता है बॉर्डर्स की तरफ, सीधे वॉर नहीं शुरू होती है। वी टेक टाइम टू प्रिपेयर। इफ यू हैव सीन दैट कारगिल सिचुएशन, और रिसेंटली जो पाकिस्तान वाला था, तो उसमें तो हमें प्रिपेयर करने के लिए समय नहीं मिला था, बट फिर भी वी टुक 4 days, 4 to a week, so after we declared कि that we will take a revenge, so we didn't take it तुरंत ही नहीं कि गए और तुरंत से started running up, no, we have to prepare, so we will start moving all our troops to the border, so that हम सारा चीज़ें वहाँ पे अरेंज, खाना पीना, आपके जितने भी ammunitions है, we need to store that, so this is how the nature has, ये सब कुछ नेचर से लिया गया, बाहर मिमिक्री है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमारे से नेचर, हमसे, हम बाहर से लेकर नेचर को नहीं सिखा रहे हैं। इट इज ऑलरेडी देयर, इफ यू सी ईच एंड एवरी थिंग इज बेसिकली वेरी मच सिस्टमैटिक। सो सारे के सारा आपका गट के अराउंड 80% ऑफ द इम्यून सिस्टम इज टोटली डेडिकेटेड टू द इंटेस्टाइन, सिर्फ इंटेस्टाइन के चारों तरफ लगा कर रखा हुआ है। 80% आपका टी सेल्स, बी सेल्स वहीं है, वहीं डिप्लॉयड है, बिकॉज सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन वहीं से आएगा। अगर आपको पता हो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स से परेशान है, और मोर देन 60 to 70% ऑफ द जो दवाएं हम खरीदते हैं वो पेट के डायरिया के लिए खरीदते हैं या पेट की प्रॉब्लम्स के लिए ही खरीदते हैं। सो दिस इज अगेन इक्विवेलेंट कि सबसे ज़्यादा लोग पेट की दवाइयों के लिए खर्च करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल्स में सबसे ज़्यादा पेट की दवाइयाँ हैं, पेंटॉप है फॉर गैस और द स्टमक एक, और नॉर्फ्लॉस, लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। दीज आर ऑल रिलेटेड विद द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम,
बिकॉज आप रोज खाते हो और करोड़ों एंटीजन यू आर टेकिंग इट अप, एन नंबर ऑफ एंटीजन्स. सो आपको बॉडी सेफ कैसे है? सो दे आर टू प्रोसेसेस. फर्स्ट इज दैट अमाइनो एसिड्स जो सिंगल मोनोमर्स हैं आपके, वो एंटर करते हैं विच आर नॉट एंटीजेनिक. और जब एंटीजेनिक तभी होते हैं जब ये 15 से 16 18 अमीनो एसिड से बड़े पेप्टाइड्स होते हैं. दे आर ओनली योर एंटीजेनिक, और वो डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते. वो डायरेक्टली एंटर सिर्फ और सिर्फ सीलियाक डिजीज में होते हैं, जहाँ पे वी हैव सर्टेन रिसेप्टर्स विच आर म्यूटेंट and which take up the egg white protein directly inside without breaking it down into amino acids. इसीलिए पीनट एलर्जी होती है, इसीलिए आपका एग वाइट एलर्जी होती है, या फिर आपका ग्लूटेन एलर्जी होती है, सोयाबीन से एलर्जी होती है. दीज थिंग्स आर देयर. ओके, सो दीज आर योर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. स्ट्रेस इज अगेन अ प्रॉब्लम. स्ट्रेस आपको लगता है स्ट्रेस से कैसे हम कर सकते हैं? नो, स्ट्रेस इज अ मेजर प्रॉब्लम, बिकॉज इफ यू सी एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ी है सबने अच्छे से, +2 तक तो पढ़ी होगी. तो देर इज एन एड्रीनल हाइपोथैलेमस हाइपोफाइजियल सिस्टम HP एक्सिस जो होती है. सो स्ट्रेस वहीं पिट्यूटरी से रेगुलेट होता है. तो जैसे स्ट्रेस में आप आते हो, लॉट ऑफ कॉर्टिकोसोल इज बीन रिलीज्ड, एंड दिस कॉर्टिसोल इज बेसिकली अ स्टेरॉइड. ठीक है, दैट विल एनहांस योर बोन लॉस. अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टली करेगा, दूसरी चीजें तो करेंगी. सो दिस इज हाउ योर दीज थिंग्स दे लीड टू योर सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस. सो नाउ कमिंग टू द रिस्क फैक्टर्स. क्या क्या हैं, क्या क्या रिस्क हैं जो कि हमको ऑस्टियोपोरोसिस के लिए वी कैन हैव इट. सो इफ यू सी हियर, तो कोमॉर्बिडिटीज की बात हो गई, एज की बात हो गई, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात हो गई, हार्मोनल ऑर्गन्स की बात हो गई, लेकिन दो चीजें इवन इंपॉर्टेंट आ गए, योर गट एंड इम्यून सिस्टम, जिसकी मैं ज्यादा बात कर रहा हूँ. सो आई विल बी लेटिंग यू नो हाउ योर इम्यून सिस्टम एंड गट आर लिंक्ड एंड हाउ दीज टू आर एक्चुअली एनहांसिंग योर बोन लॉस. ओके, सो अब आते हैं हम, व्हाट हैपेंस इज दैट जब स्ट्रेस होता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं, ये ऑस्टियोक्लास्ट आपके ज़्यादा हो जाते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट आपके कम हो जाते हैं. तो जो बोन फॉर्मेशन इक्वल टू बोन लॉस है, वो बैलेंस होता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में. बट किसी भी इन्फेक्शंस में, कोमॉर्बिडिटीज़ में या इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में ऑस्टियोक्लास्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है और ऑस्टियोब्लास्ट का कम हो जाता है. द बोन इज लॉस्ट मोर, फॉर्म्ड लेस. So net balance towards net bone loss हो जाता है. So that is how we can stop it, how we can target it. तो ऑस्टियोक्लास्ट को हमें कम करना चाहिए, ऑस्टियोब्लास्ट को बढ़ाना चाहिए. कोई भी ड्रग ऐसी नहीं है आज के डेट में जो कि ऑस्टियोब्लास्ट को भी बढ़ाए और साथ ही साथ में ऑस्टियोक्लास्ट को भी कम करे. या तो ऑस्टियोक्लास्ट को ही कम कर देगी या ऑस्टियोब्लास्ट को बढ़ा देगी. So this is the term which we have coined. तो अभी पहले पे आते हैं कि how immune system is important in regulating your bone loss. So पहले टर्म पे आते हैं. So this is what this term was coined by me in 2018, that is we call as immunoporosis, that is immunology of osteoporosis. 2018 we coined it up, and because before that nobody has studied the role of immune system in osteoporosis. It was studied in rheumatoid arthritis जो कि autoimmune disease है, and other maybe other bone pathologies, infections वगैरह में, but nobody has ever looked at osteoporosis कि एक immune mediated disease हो सकती है. No, because people they have always considered osteoporosis as a metabolic disease. ओनली मेटाबॉलिज्म से रिलेट किया हुआ है, और एंडोक्राइनोलॉजी में ही ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट होता है. अभी भी एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही आपका ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट करेगा, ऑर्थोपेडिशियन भी नहीं करेगा, क्योंकि ऑर्थोपेडिशियन इज जस्ट फॉर फ्रैक्चर्स एंड योर इम्प्लांट्स. सो टेक्निकली स्पीकिंग एंडोक्राइनोलॉजी वाले आपका ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट करते हैं, जस्ट लाइक डायबिटीज एंड अदर हार्मोनल चेंजेस. हार्मोन से लिंक्ड है ये, बट दिस इज नॉट द केस. सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस वर्क ऑलमोस्ट 12 years back, 2013, when I came back to India, I was looking what to do, because मेरी training हुई थी as an immunologist and also as a bone biologist at NCCS Pune. So I was in a lab जहाँ पे एक मेरे जो गाइड थे वो प्योर इम्यूनोलॉजिस्ट थे, और एक मेरे गाइड थे वो प्योर बोन बायोलॉजिस्ट थे. और दोनों लोग को, एक को इम्यूनोलॉजी नहीं आती थी, दूसरे को बोन बायोलॉजी नहीं आती थी. दोनों को दो चीज़ें आती थी, है ना संतोष? So when I joined there, so I joined the immunologist one. So I asked him कि सर ये मेरे को इम्यूनोलॉजी करना है, इसलिए मैं आपके पास. उन्होंने कहा भाई हमारी लैब तो बंद हो गई है, तुम एक काम करो, एक डॉक्टर वानी है उनके लैब में जाओ, उनके साथ हमारा कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे, जो कि बोन और इम्यून सिस्टम का प्रोजेक्ट है. ठीक है, तो मैं उनके पास गया. ही बिकेम माई गाइड ऑन पेपर. सो द प्रॉब्लम वॉज दैट कि उनको प्योर बोन बायोलॉजी आती थी और दूसरे को प्योर इम्यूनोलॉजी आती थी. कोई कनेक्टिंग लिंक हम ही थे आर्कियोप्टेरिक्स जैसे. ठीक है, सो द प्रॉब्लम वॉज दैट कि हमें जब कोई चीज़ समझानी होती थी दोनों को, इट वॉज अ वेरी ह्यूज टास्क, बिकॉज
एक आदमी जो इम्यूनोलॉजिस्ट थे वो डायरेक्टर थे, ही डिडंट हैड एनी टाइम, और दूसरे के पास समय समय था, ही वॉज रेडिली अवेलेबल, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बट इम्यूनोलॉजी नहीं आती थी, और लैब में कोई इम्यूनोलॉजी भी नहीं था, सीनियर इम्यूनोलॉजिस्ट भी नहीं था जो मुझे सिखाए. तो दिस इज हाउ स्टार्टेड लर्निंग इम्यूनोलॉजी. जब कोई नहीं होता तब ज़्यादा मेहनत करते हो, क्योंकि आपको सब खुद से करना होता है, कोई है नहीं आपको पकड़ करके चलाने वाला. So this is how we started, and I learned immunology there. I learned bone biology there. पहले तो मेरे को लगा कि ये तो बड़ी गलत बात हो गई कि मैं गलत लैब में आ गया जहाँ पे मेरे को सिखाने वाला कोई है ही नहीं. बट आई इन द लॉन्ग रन दैट वाज वेरी बेनिफिशियल, और ये तब मुझे लगा when I came back to India from my postdoc 2013 in a Central University in Sagar MP, जो आप ही का स्टेट था पहले. So you know that Central University in Sagar Hari Singh Gaur University. So I was an assistant professor there 2013. So when I came there, being an immunologist, I needed an animal house. Animal house तो था ही नहीं वहाँ पे. अब भाई हम कैसे करेंगे science? So that was a major bottleneck for me. Then I started because I was trained into rheumatoid arthritis, जो कि autoimmune disease थी, plus cancer immunology, जो कि again फिर mice चाहिए हमें ढेर सारा immunology के लिए. Lot of setup is different for immunology because very costly research in immunology because everything is based upon antibodies. Primary antibodies और antibodies सब बहुत महंगी होती हैं. So when I was searching the literature, this is how I started doing research on osteoporosis. Then I was starting literature search कि भाई कौन सा ऐसा मॉडल होना चाहिए जिसमें कि इन्फेक्शन का रोल ज़्यादा नहीं होना चाहिए इम्यून सिस्टम का. अदरवाइज ना फिर हमारे पास कंडीशंस ऐसी नहीं है, माइस को हम बहुत ही पैथोजन फ्री कंडीशंस में नहीं रख पाएंगे स्टेराइल एनवायरनमेंट में, इसलिए हम इन्फेक्शन का काम नहीं कर सकते हैं, एंटीजन वाला कोई काम नहीं कर सकते हैं. अदरवाइज कहीं ना कहीं से एंटीजन आ जाएगा, मेरा कंट्रोल खराब हो जाएगा. दिस और बोन बायोलॉजी भी करनी थी एक्सपर्टीज के हिसाब से. व्हेन आई सर्च आई केम टू नो कि ऑस्टियोपोरोसिस में किसी ने इम्यून सिस्टम से लिंक ही नहीं किया. ये तो बड़ा मेरे को आश्चर्य हुआ. ये तो गलत बात है कि इम्यून सिस्टम जब बोन के अंदर रह रहा है और बोन से बात ही न करे, ये तो हो ही नहीं सकता है. एक ही घर में 10 लोग हो और 10 लोग एक दूसरे से बात ना करें, कभी कभार लड़ाई झगड़ा अलग चीज है, बट देन ऑल्सो लड़ाई झगड़ा इज अ कॉज फॉर पैथोलॉजिकल रीजंस. ठीक है. सो दैट इज व्हाट क्लिक्ड मी कि देयर शुड बी समथिंग, देयर शुड बी अ लिंक बिटवीन ऑस्टियोपोरोसिस एंड इम्यूनोलॉजी. ऐसा नहीं हो सकता, इम्यून सिस्टम भी अफेक्ट करेगा और ये भी अफेक्ट करेगा, रेसिप्रोकल. सो क्योंकि मैं इम्यूनोलॉजी था तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड था इम्यून सिस्टम कैसे कर रहा है, ना कि उल्टा. सो अभी उल्टा वाला काम अभी भी किसी ने नहीं किया हुआ कि कैसे बोन से ऑस्टियोब्लास्ट कैसे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, अभी भी नहीं हुआ है. ठीक है. बट हाउ इम्यून सेल्स दे डू, व्हिच वी हैव स्टार्टेड डिस्कवरिंग. जब मैंने लिटरेचर सर्च किया तो जितने भी सेल्स इधर एडाप्टिव है और इनेट हैं, इस पे रेयरली किसी पे भी कोई भी पेपर्स थे ऑन ऑस्टियोपोरोसिस. अब ऑस्टियोपोरोसिस का मॉडल मेल्स पे तो डेवलप हो नहीं सकता है क्योंकि वो एजिंग होगी. अब माइस को लेकर के 3 साल 4 साल 5 साल हाउस करना, खर्चा करना, और 5 साल बाद वेट करना, रिजल्ट आ रहे हैं, अगेन वेरी कॉस्टली. तो देन मेरे को ये ध्यान में आया कि ओवरेक्टोमी बड़ी आसानी से की जा सकती है. फीमेल माइस लेकर के दोनों ओवरीज आप हटा दीजिए, तो दैट विल मिमिक योर एस्ट्रोजन खत्म, वो पोस्ट मेनोपॉज हो जाएगा, और विद इन 1.5 महीने के अंदर उसके पास बोन लॉस शुरू हो जाता है. तो 1.5 महीने का मॉडल था वो, मतलब 2 से 2.5 महीना टेकिंग द माइस, थोड़ा सा उसको वो किया, फिर सूचरिंग की, फिर हफ्ते भर वेट किया, फिर स्टार्ट किया. सो 1.5 से 2 महीने का मॉडल था वो. सो दैट वाज गुड. 2 महीने के लिए वी कैन हाउस इट इजीली. तो वी डेवलप्ड अ स्मॉल एनिमल हाउस टू कॉल द ethical approvals and everything. एक छोटे से रूम में we started that and we got exciting result. This is how we discovered. So starting from TH1 TH2 का रोल थोड़ा बहुत known था, और in case of RA T-Rex भी थे known, but कुछ ही का भी osteoporosis में था. We started from here TH1 and now we have done till T-Rex. सबका डिस्कवर किया हमने रोल क्या होता है. And in NET also we started from, we are doing ILCs पे कर लिया है, NK पे कर लिया है, डिसीज, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, ये भी चल रहे हैं. सो वी हैव डन फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. कुछ अभी चल रहे हैं, कुछ ऑलरेडी वी हैव रिपोर्टेड. एंड दिस इज द फील्ड विच वी कॉइन्ड द इम्यूनोलॉजी ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, इम्यूनोपोरोसिस, हाईली cited. If you see within 5 years it almost reached 350 citations. And because bone field is very few, इंडिया में 4-5 बोन बायोलॉजिस्ट होंगे. एक हम है, एक मेरे बॉस थे डॉक्टर वानी, ही इज नो मोर, एक ग्रुप IIT कानपुर में, एक CDRI में है. दैट्स इट, खत्म बोन बायोलॉजी इन इंडिया. अगर 4 लोग हैं तो साइटेशंस कहाँ से आएंगे? इफ़ यू सी ऑन कैंसर, लॉट मनी पीपल आर वर्किंग सो दे कैन साइट ऑल्सो. यहाँ पे साइटेशंस के चांसेस कम है. उसमें से भी अगर आपको इतने साइटेशंस मिल रहे हैं जहाँ पे लोग ही नहीं, इसका मतलब हर आदमी जो भी काम कर रहा है दिस साइटिंग इट पेपर. सो दैट्स द इम्पोर्टेंस. देन वी अगेन पब्लिश, नाउ इट इज हैविंग मोर देन, इफ यू सी 450 से अधिक साइटेशंस हैं. पीपल आर स्टार्टिंग यूजिंग दिस वर्ड इन टाइटल.
not only abstract. So these are most of the papers, they come up, and all the papers come to me now for the revision because they call me as a father of immunoporosis. Okay? So now starting from here, then this is now what we are currently doing at immunoporosis. My lab's name is, ये logo है TIOL, we call it translational immunology, because being an hardcore immunologist, we not only do immunoporosis, we do other things also related to immunology. Osteoimmunology, that is the heart, how osteoimmune system, your bone and immune cells, they work. Immunoporosis का I है और ये lab है. And this is now an ICMR Center for Excellence. ICMR ने हमें हमारी importance देखते हुए in the field, they have recognized me as a Center for Excellence last year. So this is what we do currently. We are everywhere जहाँ भी bone है ना, human physiology में. So we are involved in each and everything. Starting from, we are developing biotics-based therapy for osteobiotics, probiotics कैसे use करते हैं. Osteomicrobiology, we're looking at how gut microbiota, not only your bacteria, viruses, fungi, archaebacteria, how they are governing your intestine and your bone, how the metabolism aspect is there in case of class, blast, and other things. We have published a lot of papers in each and every field so that we are recognized well. Then coming to your osteotherapy, not only your diagnostics but also your therapy also. कैसे therapy कर सकते हैं? उसमें हम लोगों ने nutritional based therapies हैं, phyto based therapies हैं, immunotherapy भी develop की हुई है. And currently we are also looking, जैसे हाथ जोड़ है, curcuming है, extracellular vesicles पे we are working. कुछ Ayurvedic compounds हैं, we have already tested and done that. Even we are working, we have a MOU with Homeopathic Center for Central Council for Homeopathy, CCRH. So they are having an MOU with us. We are testing that also कि उसमें कोई scientific validation करके कि whether जो homeopathic therapy, calcarea phosphorica है, बहुत ढेर सारी चीज़ें हम खाते हैं homeopathy में. If you see that people have their belief in homeopathy. So we are neutral. So they approached us कि if we can have an MOU with them so they can test these medications through our lab कि whether उनमें कोई scientific reasoning है कि नहीं है. So we are doing that also. Then COVID के समय मुझे समझ में आया कि infectious disease का भी बड़ा strong role होता है inflammation की वजह से, and we started on that also. So we were the first to report in the world that COVID can also induce bone loss. And that's a very seminal paper. Then ARDS, we are working on ARDS, leprosy and osteomyelitis, how these conditions are actually governing that. And these are how we looked into for future में research, diagnostic therapy. Research में we were targeting Center for Excellence, which we were already there. We're working on immunoporosis, primary, secondary. We are working on diagnostic, how we can develop biomarkers for identification of different bone pathologies, whether it is your osteoporosis, rare bone diseases such as Gaucher's and other things also. And how we can use artificial intelligence and machine learning also for better diagnosis of your bone pathologies. Plus therapy, we developed immunotherapy. Recently, we published a paper in which anti-IL-9 therapy we have recommended. And probiotics, we have done a lot of work on that. Gut microbiota based therapies, we have even recommended fecal microbiota transplantation. From transplanting your fecal matter from the intestine from a healthy person to the diseased person. That could also be a viable strategy for actually inhibiting bone loss in case of your osteoporosis for the long run. Plus 3D bioprinting, because we have implants also from one, जो आपके steel के implants होते हैं, they are having various immunological reasons. Resting तो एक part है जो कि कम होती है, but ultimately it is there. Plus they are also not compatible with the body most of the time. So we can 3D bioprint them, customized implants, better materials, which are more bone loss कम करें और bone formation को enhance करें. Plus EVs also an Ayush based therapy. So this is how we are looking into our labs mandate. So this is, we have already talked about कि कैसे आपका stress is actually through the hypothalamus system is regulating your hypothalamic hormones. And then if you see here, your thyroid stimulating, all the follicle stimulating, the follicles, the testes, ovary, progesterone, estrogen, and these are for a healthy bone, these are very much required. And if you see your endocrine organs also, thyroid, NF, PTH, calcitonin, T3, androgen, they are all required for a good bone health. But what happens if this bone formation or resorption is higher than bone formation? This is your osteoporosis develops. And if you see here from here directly, adrenocorticotropoid thyroid hormone, this is there, and this is adrenal glands को induce करता है for enhanced secretion of glucocorticoids. So एक low level, एक optimal level is fine, but a higher level is obviously a stress. So recently, the bone is also an endocrine organ also. It secretes a lot of good hormones. For example, osteocalcin. When I was in Colombia, our lab was working on osteocalcin.
and recently it has been pitched that osteocalcin is the fight and flight hormone and not adrenaline. That was a paper in Cell number of times that has been pitched for. My boss is always in the league for Nobel. He's always been nominated, but somehow he's not getting the Nobel. So they have discovered that osteocalcin is there. Dr. Gerard Carcent is in column, he's a chair there. So he discovered the role of osteocalcin. So he is a strong proponent that osteocalcin is secreted from the bone under stressful conditions, and that osteocalcin regulates your glucose. Yeah. एडिनालिन ना, या लोअर क्लास के लिए जो अभी स्टडी किया आपने, दीज आर न्यू रिसर्च, अभी धीरे धीरे टेक्स्ट बुक में आ जाएगा आपका, ठीक है. सो ऑस्टियोकैल्सिन इज बीइंग कंसिडर्ड. तो दोनों के प्रोपोनेंट है, जैसे आपने उठ के बोला बोन वाले कम है तो वो उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है, ठीक है. बट दे हैव डेटा, स्ट्रॉन्ग डेटा, दे हैव पब्लिश्ड. सेल नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट. दे हैव अ डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ऑस्टियोकैल्सिन क्या करता है, आपका सीधे पैंक्रियास पे वर्क करता है और आपको भागने के लिए ग्लूकोज चाहिए, ठीक है, ना कि कुछ और चीजें चाहिए, बिकॉज यू नीड एटीपी. और उस समय वॉबर्ग इफेक्ट आपने पढ़ा हुआ ना, ग्लूकोज ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोलिसिस से आपका 4 एटीपी 2 एटीपी नेट बनते हैं, बिकॉज आपका टीसीए साइकिल कॉम्प्रोमाइज हो जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि उतना समय नहीं होता है, आपको फास्ट एनर्जी चाहिए. तो ग्लाइकोलिसिस से होगी 2 एटीपी बनेंगे, जहाँ पे आपका हाइपोक्सिक कंडीशंस में भी हो जाएगा, क्योंकि हाइपोक्सिया भी होगा मसल्स में, ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द सेल्स विल बी स्विचिंग टुवर्ड्स लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा, फटीग डेवलप होगी एंड यू कैन नॉट रन. ऑस्टियोकैल्सिन इज वन हार्मोन, व्हाट इट डज इज दैट वो पैंक्रियास से इंसुलिन को सिक्रीट कराता है एंड इट हेल्प्स इन मेटाबोलाइजिंग ग्लूकोज एट an even faster rate with respect to your एड्रिनलिन. क्योंकि आप देखो लोअर सारे इनवर्टिब्रेट्स में एड्रिनल ग्लैंड सब जगह होता है क्या, बोन्स तो होता है, तो वो एनिमल्स कैसे भागेंगे उनके स्ट्रेस में. इसलिए ये एवोल्यूशनरी एक स्ट्रॉन्ग थियरी ये भी सपोर्ट करती है कि एवोल्यूशन में तो सबको स्ट्रेस होगा, और एवोल्यूशन का सबसे नेचर का फंडा ही यही है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो अगर वो अपनी जान बचा नहीं पाएगा तो वो स्पीशीज खत्म हो जाएगी. तो जान बचाना इज एंड रिप्रोडक्शन टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर एवोल्यूशन. You have to survive and you have to reproduce so that your species is going on and on. I'm a hardcore zoologist, I know that. So I've done an MSc in zoology, so I know that evolution is there. So bone बहुत पहले आया है, cartilaginous fishes जब shark में शुरू, उसके just बाद bone आ गया. Cartilage is also part of the bone chondrocytes. So वहाँ पे जहाँ पे lower invertebrates में, जहाँ पे we don't have any other things, these things are there. Okay, so this is how we need to take care of this also. और जहाँ पे lower in, जहाँ adrenal gland नहीं है, वहाँ पे भी animals भाग रहे हैं, वहाँ bone है, ठीक है. So that's why that's a very strong proponent और theory है ये proof के साथ कि osteocalcin should be the flight and fight hormone, not your adrenaline. वो higher में आपको दिखेगा adrenaline ज़्यादा important, but bones came into evolution much earlier than your human also what? Osteocalcin. Yeah, it is there. तो आप ये क्या बताओ, आप ऑस्टियोकैल्सिन को मान रहे हो या फिर एड्रेनालिन को मान रहे हो? अच्छा अच्छा, तब ठीक है. Okay. So now coming back here. So this is how your sex hormones, if you see females with testosterone, estrogen, progesterone, these are also then the males also, but at a lower levels, estrogen specifically. So with age, this is going loss and glucocorticoid increase, type 2 diabetes, aging is there, a lot of osteoporosis is there, and the balance is gone, and this is how your osteoporosis develops. And if you look at a molecular level, if you see the follicle stimulating hormone is being secreted from the brain, it acts on the ovaries, estrogen is being released. Estrogen normally what it does, it reduces the ROS generation in the body, reactive oxygen species, जो कि हमारा detrimental है for most of the physiological processes. And ROS is important for your rankle secretion from your osteoblast. Rankle is a receptor activator of nuclear kappa B. Ligand है उसका, rank receptor का, and which is there, and this is the receptor rank आपका होता है osteoclast के ऊपर. So rankle secreted and these will bind to rank and enhanced osteoclastogenesis will be there. And also these estrogens are also the stop through the estrogen 2 receptor alpha and beta in the APCs, they enhance the presentation of antigens to the T cells. So that has been stopped by the estrogen, so that these they are not inflammatory. These activated T cells have been stopped. So बहुत ज़्यादा activation आपका estrogen stop करता है.
So that is one thing, how estrogen is a strong immunomodulator. It dampens the immune responses so that autoimmunity and unnecessary activation of excess activation of T cells is being avoided. So here also if you see plus B cells को ये enhance करता है regulatory B cells का secretion IL-10. So this will I will be talking about. And if you see all the other T cells, Th1, Th2, these are inhibit bone loss. Th17 enhanced, Th9 enhanced, Tregs they inhibit that. So this is the balance is very important among all these B cells and T cells. What is the net balance will decide from an immunologically point of view कि bone loss होना चाहिए कि bone formation होना चाहिए. Okay. Now coming here, this is how we started from 2018. We field of immunoporosis was there, and then we discovered in 2018-20 itself that Th17 Treg ratio is very important for osteoporosis. And then 2022 we discovered BRAL's anti-osteoclastogenic role of regulatory B cells. 2022 we started probiotics as a therapy for your immunotherapy for your osteoporosis. 2024 we discovered the osteoclastogenic role of Th9 cells, and then 25 immunotherapy against IL-9, that again for osteoporosis. In 2025 we established this gut immune bone axis, how gut activates your immune system and then immune system is your linked with your bone. So this axis was later on this we published this year itself in gut microbes, and this is what I will be talking about briefly. Okay, so this is how your regulatory B cells शुरू करते हैं. ये कहानी तब शुरू हुई जहाँ Treg Th17 का already established हो गया था role. I'm not talking about how we developed, how we discovered the role of Treg and Th17 cells in osteoporosis. उसके बाद जो discovery हुई 2018 के 2020s के समय, we started this ki how regulatory B cells. So if you see in the literature, the BREGs have role in each and every other diseases except osteoporosis. So this led us to think, okay, चलो कुछ काम करने के लिए है, that's a good thing, that nobody has done this work, so we can do that. So when we started, तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा जब किसी भी आपका कोई सेल ले रहे हो, कोई मॉलिक्यूल ले रहे हो, फिर स्टार्ट की वेदर ये ऑस्टोक्लास्टोजेनिक है कि नहीं है. पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये BREGs ले तो लिया है कि शुड, तो अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो टेक्निकली it should inhibit osteoclast and enhance osteoblast. यही होना चाहिए, ठीक है, यही कंडीशन आपकी वहां पे होनी चाहिए. तो व्हाट हैपेंड कि डू BREGs हैव एंटी ऑस्टियोक्लास्टोजेनिक पोटेंशियल, तो ये होना चाहिए. जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट एक कॉल कर. शुभम आया, मैं बाहर हूँ इस समय, एक क्लास में ले रहा हूँ, ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ. हाँ, मैं बाद में बात करता हूँ. So these are the regulatory B cells which have anti-osteoclastogenic potential. We discovered that. तो हमने क्या किया, माइस लिया, माइस के स्प्लिनोसाइट्स लिए, उससे हमने नेगेटिवली सिलेक्शन करके मैग्नेटिकली सेलेक्ट करके, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, हमने B cells निकाले प्योर, 99% प्योर B cells लिए. B cells से फिर हमने रेगुलेटरी B cells बनाया. कैसे? LPS डाला. LPS स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है कि LPS TLR4 के थ्रू जाता है. इफ यू रिमेंबर दैट, इफ यू स्टडीड दैट, TLR4 के थ्रू LPS आपका इंड्यूस करता है रेगुलेटरी B cells का जनरेशन फ्रॉम नॉर्मल BREGs. तो 3 से 4 दिन कल्चर्स में रखने के बाद वी आइसोलेटेड दोस BREGs, और उस BREGs को हमने को कल्चर किया क्योंकि हमें ऑस्टियोक्लास्ट देखना था. तो हमने उसको को कल्चर किया विथ योर ऑस्टियोक्लास्ट प्रीकर्सर्स जो बोन मैरो से निकाले हमने. जब हमने दोनों को को कल्चर किया तो दो मेथड हो सकते हैं ना, कि आप सोचो कि हो सकता है डायरेक्टली कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट, हमने उसको एक साथ को कल्चर करके देखा तो ये पॉजिटिव थे. इसमें जो रेड रेड दिख रहे बड़े बड़े ये ऑस्टियोक्लास्ट है. ऑस्टियोक्लास्ट मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं. एक ऑस्टियोक्लास्ट पे 200 तक न्यूक्लियस हो सकते हैं. तो छोटे 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 मिलकर के बड़े जायंट्स हो जाते हैं, सो दैट दे कैन स्टार्ट द बोन रिजॉर्प्शन की मशीनरी है, वो पूरी मशीन है, वो JCB जैसे खुदाई कर रही है, ठीक है. इट्स नॉट अ स्मॉल, एक एक बंदा लेके फावड़े से आपका नहीं गड्ढा खोद रहा. इट्स अ JCB ऑलमोस्ट इक्वल टू 200 पीपल, 200 न्यूक्लियाई है, दैट मींस 200 सेल्स हैव फ्यूज्ड टुगेदर, पॉलीकैरियन बन गया है, एंड दैट इज वर्किंग एज अ ऑस्टियोक्लास्ट, एज अ रिजॉर्प्शन मशीनरी है वो. ह्यूज बोन लॉस. तो ये आपका देखो ट्रैप से इसको स्टेन करते हैं. देयर इज अ मार्कर फॉर योर ऑस्टियोक्लास्ट, टार्ट्रेट रेजिस्टेंट एसिड फॉस्फेटेज एक एंजाइम होता है प्रेजेंट ऑन ऑस्टियोक्लास्ट, पिंक रंग का दिखता है. तो जैसे इसको हमने B सेल्स के साथ को कल्चर किया, देखो कम हो गया, दे आर गॉन. तो ये पहला था कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट. तो हमें लगा कि हो कैसे रहा है, मैं कहना था इधर इट इज कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट और कुछ सॉलेबल मेडिएटर्स आपके में भी निकल रहे होंगे, और कॉन्टैक्ट इंडिपेंडेंट है. तो हमने क्या किया, कॉन्टैक्ट इंडिपेंडेंट के लिए व्हाट वी डिड अ ट्रांसवेल सेटअप. मतलब हमने उसी कल्चर प्लेट में एक ट्रांसवेल डाला छोटा सा, उसमें ऊपर हमने BREGs रखे, नीचे ऑस्टियोक्लास्ट रखा, दोनों में फिजिकल कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया. ओके, सो दिस इज हाउ दे हैव बीन सिक्रेटेड फ्रॉम दे. एंड देन वहां पे हमने देखा कि इट वाज अगेन कॉन्टैक्ट इंडिपेंडेंट पे भी ये
5:1, 1:1 सब पे देखा, and that was actually going down. Osteoclastogenesis was going down. So this is how, तो ये कैसे हो रहा है? अब ये contact soluble mediators का मतलब contact is not important. ये विदाउट कॉन्टैक्ट के भी एंटी ऑस्टियोक्लास्टोजेनिक इफेक्ट शो कर रहा है. सो क्योंकि बीरेक्स आर नोन टू सिक्रीट लॉट ऑफ IL-10, इनका मेजर आपको मॉलिक्यूल होता है IL-10, IL-35, TGF बीटा. सो व्हाट वी डिड, हमने क्या किया, इन्हीं कल्चर्स में एंटी IL-10 डाल दिया एक में, ताकि वो सारे IL-10 को बाहर ही न्यूट्रलाइज कर दे और सेल के ऊपर लगने ना दे. एंटी IL-35 डाला, एंटी TGF बीटा डाला. तो व्हाट वी डिड फाउंड वाज दैट कि एंटी IL-10 जैसे ही आप डाल रहे हो, so that is having a huge, जो ऑस्टियोक्लास्टोजेनिक इफेक्ट था वो चला गया, इनहिबिटरी इफेक्ट. जैसे आपने एंटी IL-10 डाला, देखो आप यहाँ पे ढेर सारे आपके ऑस्टियोक्लास्ट फिर से दिख रहे हैं. So that means that was majorly driven by your IL-10 cytokine, which is a signature cytokine for your osteoclast. BREX, sorry. अभी देखो ये चल नहीं रही है स्लाइड्स, बिकॉज लॉट ऑफ स्लाइड्स हैव गॉन ब्लैंक. इसमें एक और हो गया, आप वो लगाओगे क्या, PDF लगा दोगे आप उसमें? So a lot of the slides are not here because this is an older version of Microsoft. आपका ये क्या है, ये 2003 है क्या ये? हाँ, यस, उस पर सिंगल व्यू पे आता है, उस पर ना, उसमें डाल देना. छोड़ दो. So now coming to here, if we talk about, हाँ ये स्लाइड मिस हो गई थी. If you see the मेल्स में आपका पीक बोन मास इज दैट 20 years, फीमेल्स में उस हिसाब से कम है बोन मास. एंड इफ यू सी प्रेवलेंस ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, विमेंस में ज़्यादा है, मेंस में पहले ज़्यादा थी, लेकिन बाद में आफ्टर सम टाइम इट इज़ गोइंग अप आफ्टर पोस्ट मेनोपॉज. And if you see the prevalence of type 2 diabetes is equivalent in both male and females. And this is the mortality after hip fracture, women's में ज़्यादा है. And average hormonal production is more in case of your males at certain time point and females में कम होता है. So these are some of the data which is there. This I already talked about, and this was there. So अब next question था कि क्या BREGs they were actually working as an anti-osteoclastogenic agents. Now the next question was that क्या BREGs ऑस्टियोपोरोसिस में कम हो जा रहे हैं, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस तो बढ़ रही है. दैट मीन्स BREGs हमारे उनका या नंबर है, फंक्शन है, कुछ तो कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए. सो व्हाट वी डिड फाइंड वाज दैट, हमने देखा कि वो उनका कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे वो ओवरेक्टोमाइज माइस में, जो हमने मॉडल बनाया था ना ऑस्टियोपोरोसिस का. उसमें जब हमने दोनों से क्या किया, कंट्रोल माइस थे एक जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस थी, दोनों के हमने B सेल्स निकाले और उनको को कल्चर किया ऑस्टियोक्लास्ट के साथ. तो जो हमारे ओवरेक्टोमी वाले, जो ऑस्टियोपोरोटिक वाले BREGs जो ऑस्टियोपोरोसिस वाले माइस में से निकाल रहे थे, वो ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट नहीं कर पा रहे थे, उसमें ज़्यादा ऑस्टियोक्लास्ट बन रहे थे, और जो कंट्रोल वाले थे वो स्टॉप कर रहे थे. दैट मीन्स कि जो ऑस्टियोपोरोसिस के BREGs हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं अपना नॉर्मल फंक्शन करने के लिए. दैट मीन्स इनहिबिटिंग और ऑस्टियोक्लास्टोजेनेसिस, दिस इज फाइन. सो वो नॉर्मली अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पा रहे थे. दैट मीन्स कि देयर फंक्शंस इज कॉम्प्रोमाइज्ड. तो आप यहाँ से भी हमने फ्रीक्वेंसी भी उनकी देखी, नंबर्स भी फ्लो साइटोमेट्री से फैक्ट्स हैं. देखो आपका 5% थे नॉर्मल में, यहाँ पे 2% हो गए, आधा हो गए. ठीक है, फिर दो तरह के BREGs थे तो वो 4 से 1% हो गया है. ठीक है, दिस इज टाइम काइनेटिक्स की 2 वीक पे, 4 वीक पे, 6 वीक पे आप देखो सबसे कम हो गए. बोथ हैटी और बोन मैरोज में हम ये देख रहे हैं. बोन मैरो में हमने इसलिए देखा, अपार्ट फ्रॉम स्प्लीन, मिल, MLN सब में देखा, बोन मैरो में सबसे ज़्यादा आपका ऑस्टियोपोरोसिस होती है, क्योंकि लॉन्ग बोन्स हैं, वहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा दिखती है प्रोमिनेंटली. सो वी लुक्ड इनटू दैट साइड्स कि वहाँ पे क्या हो रहा है. एंड ऑल्सो BREGs एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इसका मतलब इसका नंबर भी कॉम्प्रोमाइज कम हो गया, फंक्शन भी कम हो गया इन केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. प्लस एक BREG का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो T सेल के जो प्रोलिफरेशन को है वो इनहिबिट करते हैं नॉर्मल, और T सेल्स के नाइव T सेल्स को दे डिफरेंशिएट इनटू रेगुलेटरी T सेल्स, और TH17 को कम करते हैं और Tregs को इंड्यूस करते हैं. ये BREGs क्योंकि वो भी टॉलरेंस इंडक्शन है, तो वो हमारे इसी हिसाब से BREGs क्योंकि BREGs पहले आते हैं Tregs से इन केस ऑफ योर हायरार्की, बिकॉज BREGs कैन कंट्रोल T सेल्स. ओके, तो हमने 2 तरह के एसेस किए कि वेदर BREGs का जो ये फंक्शन है T सेल्स के प्रोलिफरेशन को वो रोक सकते हैं कि नहीं.
सो इफ यू सी हियर इनका प्रोलिफरेशन, जब नॉर्मल टी जो बीरेक्स हमने निकाले हैं कंट्रोल माइस से, उसमें तो ये अच्छे से इनिबिट कर रहा है, 80% ऑफ सेल्स को इनिबिट कर दिया प्रोलिफरेट करने से। लेकिन जब हमने उसको ऑरेक्टोमी वाले या ऑस्टियोपोरोटिक में से निकाला, सिर्फ 47% ऑफ टी सेल्स को इनिबिट कर पा रहा, मतलब इसकी जो फंक्शन है वो 50% रिड्यूस हो गई है। प्लस जो टीरेक्स को इंड्यूस करना था वो कम हो गया इसका, ऑस्टियोपोरोटिक वाले बीरेक्स का, और TH17 को जो इनिबिट करना था वो भी कम हो गया, TH17 ज़्यादा हो गए हैं उस वाले में और टीरेक्स कम हो गए हैं, जो कि अगेंस्ट अल्टीमेटली मतलब बीरेक्स का जो फंक्शन है और नंबर है वो सब के सब कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है इन केस ऑफ दीज माइस। सो बीरेक्स आर रिड्यूस्ड इन क्लिनिक्स, ओके, सो दीज आर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड इन द क्लिनिक्स। ये हम फिर पेशेंट्स में देखा हमने, ओके, तो हमने पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोटिक जो विमेंस आती हैं क्लिनिक्स में, ओपीडीज में आती है, उनके ब्लड लिए और उनमें देखा हमको बोन का टर्नओवर, मार्कर्स और साइटोकाइंस सब में अच्छा मिल रहा था। IL-10 उनमें देखो कम है पीबीएमसीज में, और IL-17 हाई, IL-17 TH17 बनाता है और IL-10 टीरेक्स बनाते हैं। नोबेल प्राइज इस बार का टीरेक्स पे ही है, पता है ना सबको। तो इन IL-10 आपका टीरेक्स भी बनाते हैं और बीरेक्स भी बनाते हैं, ठीक। तो आपका देखो IL-10 का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में कम है, TH17 का ज़्यादा है IL-17 का। तो जब हमने उनके ब्लड में बीरेक्स की संख्या देखी तो बीरेक्स उनकी कम थी। ऑस्टियोपोरोटिक विमेंस देखो कितनी ज़्यादा कम है, 10 से 1 हो गई है, मतलब 90% रिडक्शन। एंड आपका बीरेक्स, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखो टीरेक्स बड़े कम हो गए उनमें और TH17 हाई है। तो उनके अगर हम एक ऑस्टियोपोरोटिक विमेन में से निकाला पीबीएमसी और ऑस्टियोक्लास्ट के साथ कल्चर किया, तो हमने पाया कि जो ऑस्टियोपोरोटिक विमेंस थे उनके केस में हमारे जो ऑस्टियोक्लास्ट बीरेक्स थे जैसे माइस में थे, वो हमारे इनिबिट नहीं कर पा रहे थे ऑस्टियोक्लास्ट को फ्रॉम द ऑस्टियोपोरोटिक विमेन। दैट मीन्स कि जो हमें डेटा मिल रहा था माइस में, जो कि प्री क्लिनिकल मॉडल है, सेम डेटा हमें ह्यूमंस में भी मिल रहा था। दैट मीन्स कि हमारा जो मॉडल था, हमारी जो साइंस थी, दैट वाज शोइंग प्रूफ इन केस ऑफ योर क्लिनिकल सैंपल्स ऑल्सो। दैट इज फाइन। कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी। तो ये इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट था, व्हाट वी डिस्कवर्ड की रेगुलेटरी बेसिस। तो अभी समरी क्या थी, ये रेगुलेटरी बेसिस हमने डिस्कवर किया वो एंटी ऑस्टियोक्लास्टोजेनिक होती, या नहीं, इट्स फाइन, आई विल जस्ट फिनिश इट अप। या 10 मिनट दो आप, 10-15 मिनट, वी विल बी रेडी। आप लोग लो, आई विल जस्ट कम। सो रेगुलेटरी बेसिस वी डिस्कवर्ड कि एंटी ऑस्टियोक्लास्टोजेनिक होती है, ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करता है। दूसरा, माइस में और ह्यूमंस में उनका नंबर कम हो जा रहा है और उनका फंक्शन भी कम हो जा रहा है। फंक्शन क्या, ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करना, IL-10 बनाना, IL-10 से वो टीरेक्स को और बढ़ाना और TH17 को कम करना। तो जो इन्फ्लेमेटरी बैलेंस है, TH17 इन्फ्लेमेटरी होते हैं, टीरेक्स आपके रेगुलेटरी होते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, टॉलरेंस इंड्यूस करते हैं, सेंट्रल टॉलरेंस और पेरिफेरल टॉलरेंस दोनों। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब गट की बात करें, अभी इम्यून की बात कर लिया हमने, अब गट की बात करते हैं कि गट कैसे लिंक्ड है। तो गट डिस्बायोसिस एक टर्म होता है, पता है ना, मतलब गट का जो आपका नॉर्मल गट में आपके ढेर सारे बैक्टीरियाज हैं, ये पता है, और वो बैक्टीरियाज आपके ट्रिलियंस के नंबर में होते हैं। आपकी बॉडी में जितने सेल्स हैं, अगर 10 सेल आपकी बॉडी में है तो आप गट में 100 बैक्टीरिया है। तो मतलब आपके बॉडी के जितने नंबर ऑफ सेल्स हैं उससे 10 गुना ज़्यादा नंबर में बैक्टीरियाज आपके गट के अंदर हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग, हाँ, सो जो हम पेशेंट्स लिए हैं ना, दे डिडंट हैड एनी, उनमें कोई थेरापी नहीं चल रही थी, तो वो ट्रीटमेंट नाइव थे, पोस्ट मेनोपॉजल थे, मतलब उनमें एस्ट्रोजन जा चुका था, मेनोपॉज हो चुका था, 1 से 2 साल उनकी एस्ट्रल साइकिल आई नहीं थी, मतलब वो टोटली मेनोपॉज में थे, ठीक है, कोई इनको थेरापी नहीं चल रही थी। फर्स्ट टाइम डायग्नोज हुआ था कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस, हमने डेक्सा कराया था। डेक्सा क्या होता है, ड्यूअल एब्जॉर्प्शन, आपका वो बोन डेंसिटोमेट्री जिसको बोलते हैं। डेक्सा में एक स्कोर होता है टी स्कोर, अगर वो टी स्कोर -2.5 से नीचे होता, मतलब 2.6, -2.6, 2.7, -3, तो वो ऑस्टियोपोरोटिक होते हैं पेशेंट, बोन की डेंसिटी कम होती है। अगर -2.5 से ज़्यादा होता है, ज़्यादा मतलब -2.4, -1, 0 या प्लस में, ठीक है, तो समझ रहे, माइनस प्लस की बात हो रही है, तो -2.5 से ज़्यादा तो वो ऑस्टियोपोरोसिस, -2.5 से कम तो वो नॉर्मल है। ऑस्टियोपीनिया आएगा, फिर -1 से कम आएगा तो नॉर्मल है। तो सारा हमने वो सब कर लिया था, सारा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, इंक्लूजन क्राइटेरिया, और वही पेशेंट्स लिए थे जिनमें कोई ट्रीटमेंट नहीं था,
ठीक है। और नॉर्मली जो हार्मोनल थेरेपी देना होना चाहिए था पहले, वो पीटीएच होती थी, पैराथायराइड हार्मोन। एस्ट्रोजन भी रिकमेंड करते हैं एस्ट्रोजन, लेकिन आप कंटिन्यूसली देने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है, ठीक है। और पीटीएच का दोनों फंक्शंस हैं, अगर बहुत ज़्यादा पीटीएच कंटिन्यूसली दोगे तो बोन लॉस करता है, और बीच में गैप करके दोगे तो वो बोन फॉर्मेशन करता है, इसलिए पीटीएच को भी रिकमेंड नहीं करते क्योंकि वो हार्मोन है, ठीक है। हार्मोन के अदर प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो सेफ हो, लॉन्ग टर्म पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है, इसलिए हम और भी चीजें देते हैं। क्या एस्ट्रोजन डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं कि कब हमको देना चाहिए, ज़्यादा नहीं दे सकते हैं क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर को भी इंड्यूस कर सकता है। तो नॉर्मली हम बोन लॉस को रोकने के लिए बिसफॉस्फोनेट्स देते हैं, ठीक है, बिसफॉस्फोनेट्स होते हैं वो देते हैं। कैल्शियम विटामिन डी तो हम ऐसे ही देते हैं ताकि अगर कुछ उससे ठीक हो जाए तो ठीक हो जाए, जो कि होना नहीं होता है मोस्टली। सो बिसफॉस्फोनेट्स देने पड़ते हैं, या टेरीपैराटाइड आता है, वो पीटीएच का एनालॉग है, सिंथेटिक है, ठीक है। प्लस और भी हैं, रोमोजुमैब है, डेनोजुमैब है, एंटी रैंकल एंटीबॉडी भी देते हैं, ठीक है, एंटी स्क्लेरोस्टिन एंटीबॉडी भी देते हैं। ये सब ऐसे रेगुलर लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा, इट्स नॉट रिवर्सिबल, बिकॉज ये नेचुरल प्रोसेस है, बॉडी में हार्मोन बन ही नहीं रहा है, तो आप 4 महीने कैसे दे करके हार्मोन को नहीं करवा सकते हो। तो ये आप तो कुछ आपके डेली लेने होते हैं टैबलेट्स, कुछ आपके 6 महीने पे होते हैं इंजेक्शन, कुछ 1 साल पे होते हैं। तो डिपेंड्स कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हो, क्या आपके लिए ठीक है। वो सारे थेरापीज ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हैं, लेकिन इन सबके ड्रॉबैक्स हैं, सीरियस ड्रॉबैक्स हैं। 2 साल के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो कुछ को 3 साल के बाद रोकना पड़ता है, दूसरे पर डालना, स्विच करते हो, जैसे स्विच करते हो फिर से जितना इफेक्ट आपको पॉजिटिव मिला सब नेगेटिव में चला आता है। लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आर देयर, एंड दैट्स व्हाई द नीड फॉर ऑस्टियोपोरोसिस रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अब गट माइक्रोबाटा पे अगर हम आए, तो गट माइक्रोबाटा का कंपोजिशन आपका 10 टाइम्स आपके अपनी सेल से, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी में आपसे ज़्यादा बैक्टीरिया है। तो आप अपनी सेल में रह रहे हो अपने बॉडी में, कि उसके बॉडी में आप रह रहे हो, उसके सेल नंबर ज़्यादा है ना। तो टेक्निकली स्पीकिंग हमारे बॉडी में हमसे ज़्यादा बैक्टीरिया है, दैट मीन्स कि उनके घर में शायद हम रह रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि गट बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा सेरोटोनिन सिक्रीट करते हैं बॉडी का, मोर देन 80% ऑफ द सेरोटोनिन इज बीन सिक्रीटेड बाय योर गट माइक्रोबायोम। और सेरोटोनिन से ही हम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो बेसिकली वो डिसाइड करते हैं कि हम क्या बोलें, हम क्या सोचें, और हम क्या करें, और हम क्या खाएं, और वो हम वही खाएंगे जो उनको चाहिए, ठीक है। हमारा मूड वैसा ही रहेगा जो उनको चाहिए। तो अगर हमारा गट माइक्रोबाटा हेल्दी है तो हम हेल्दी है, ऊपर से नीचे तक। अगर हमारा गट माइक्रोबाटा डिस्टर्ब है तो वी कुड बी इन प्रॉब्लम, स्टार्टिंग फ्रॉम ए मेंटल हेल्थ, osteoporosis, immune system, cancer, Alzheimer's, Parkinson's. Each and every disease has now been linked with gut microbiota. So when we started this research in 2013, सागर में लोग कहते थे पागल हो गया, प्रोबायोटिक्स खिला रहा है, प्रोबायोटिक्स क्या होता है, कुछ नहीं होता है, दही खाने से ही होता है सब कुछ, तो हम तो इतने सालों से दही खा रहे हैं, तो हमें क्यों हो गई डायबिटीज़। लेकिन फॉर योर ओन डेटा, दही में बहुत कम होते हैं प्रोबायोटिक्स, लैक्टोबैसिलस, ज़्यादा प्रोटीन हो जाता है, सब कर्ड हो जाता है। तो उसमें जितना आपको नंबर चाहिए 10.9 चाहिए बिलियन ऑफ बैक्टीरियाज डेली, और सम टाइम वो नहीं होते उसमें, तो आपको उसके लिए अलग से खाना पड़ेगा। या 1 किलो दही तो आप नहीं खा सकते रोज, कितना नंबर करने के लिए 1 कटोरी खाओगे, थोड़ा सा खाओगे, या उसकी कड़ी बना लोगे, कड़ी बनाओगे गर्म कर दोगे, सब मर जाएंगे। तो आपको डायरेक्ट खाना पड़ेगा, और 1 किलो आप खा नहीं सकते हो। तो यू कैन नॉट क्लेम कि आप रोज खा रहे हो और आपको कोई इफेक्ट दिख नहीं रहा है, तो कि आप उतना नहीं खा रहे हो जितना थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड है। दैट्स व्हाई यू नीड फ्रॉम याकुल्ट। आपने देखा याकुल्ट आता बोतल में, 10.9 बिलियन बैक्टीरिया उसमें हैं, देखो लेवल पढ़ो, ठीक है। वो डेली आपको कहता पीने के लिए, फॉर सम टाइम, 1 महीना 2 महीने के बाद ओनली यू कैन सी द पॉजिटिव इफेक्ट। क्यों? वो बैक्टीरिया जाएंगे गट में, पूरी तरफ कॉलोनाइज होंगे, और कॉम्पिटिटिव इनिबिशन करके जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया उनको हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे। तो ये हेल्दी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी, और ये हेल्दी बैक्टीरिया जो सिक्रीट करेंगे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, बाइल एसिड्स, अदर गट एसोसिएटेड मेटाबोलाइट्स, वो फिर आपको पॉजिटिव इंडक्शन करेंगे फॉर योर बेटर हेल्थ, स्टार्टिंग फ्रॉम योर ब्रेन हेल्थ, मेंटल हेल्थ, टू ईच एंड एवरीथिंग, कैंसर के लिए भी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। सो हमने सोचा कि भाई देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज इम्यून सिस्टम पूरा गट के चारों तरफ है, गट माइक्रोबायोटा को भी देखना जरूरी है कि ऑस्टियोपोरोसिस में। तो नाउ कमिंग टू द ओमिक्स पार्ट, अभी एंडोक्राइनोलॉजी से, इम्यूनोलॉजी से हम ओमिक्स पे आ गए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि गट आप देखो, अगर माइस का जो ऑस्टियोपोरोटिक वाला जो गट है कैसे आपका डिसइंटीग्रेटेड है,
हिस्टोलॉजी अगर आप करते हो तो इनकी इंटैक्ट है, इनमें काफ़ी गट इंटीग्रिटी जो होती है ना, दो एपिथेलियल सेल्स के बीच की जो इंटीग्रिटी होती है, लॉक, दैट इज लीकी। इसका मतलब यहाँ से कोई भी चीज़ आसानी से अंदर जा सकती है और जैसे ही जाएगी वो इन्फ्लेमेशन करेगी, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगी अननेसेसरली। सो हमने जब उसका एनालिसिस की तो आप देखो सारे ऑस्टियोपोरोटिक वाले एक तरफ हैं और डाइवर्सिटी और एक इसके आपके कंट्रोल वाले एक तरफ हैं। गट की लेंथ भी ऑस्टियोपोरोसिस में कम हो जाती है। उसमें जो देखो कोलन की लेंथ कम हो गई है, उसकी जो लीकीनेस है गट की, वो हम फिट्सी डेक्स्ट्रान एक ऐसे होता है जिसमें फिट्सी हम पिलाते हैं उसको डेक्स्ट्रान के साथ, फिर उसके ब्लड में देखते हैं फिट्सी कितना है, जितना ज़्यादा गट लीकी होगी ऑब्जॉर्ब हो जाएगा और ब्लड में आपको मिलेगा प्लाज्मा में, तो उसमें देखो वो भी आपका इन्हांस हो गया था, गट लीकीनेस वॉज इन्हांस्ड। फिर क्लाउडिन और ऑक्लूडिन दो आपके जंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं गट के, वो भी आपके कम हो गए थे इन केस ऑफ ऑस्टियोपोरोटिक। मतलब कि गट इंटीग्रिटी पूरी तरह से लॉस हो रही है काफ़ी, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है और इन्फ्लेमेशन ऑस्टियोपोरोसिस से लिंक्ड है। सो हमने क्या किया कि इसका मतलब गट में क्या ऐसा चेंज हो रहा है, गट माइक्रोबायोटा ही है जो दिख रहा है हमें, तो हमने फीकल मैटर निकाला दोनों माइस कंट्रोल और ऑस्टियोपोरोटिक का, उसकी हमने 16 एसआरएनए सीक्वेंसिंग कराई। इफ यू कैन सी कि ये कुछ बैक्टीरिया जो काफ़ी कम हो रहे हैं, देखो कंट्रोल का और एटॉमिक अलग कलर्स दिख रहे हैं, तो इसमें काफ़ी बैक्टीरिया ऐसे थे जो लैक्टोबैसिलस स्पीशीज के थे, बैक्टीरियोइडीज वाले, फॉर्मिक्यूट्स वाले जो फर्मेंटेशन करते हैं, वो वाले काफ़ी कम हो जाते हैं ओरेक्टोमी में, और इसमें काफ़ी नॉर्मल थे उनके नंबर्स, फाइलम लेवल पे भी, जीनस लेवल पे भी और स्पीशीज लेवल तक हमने देखा है। एंड वी डिड फाइंड कि लॉट ऑफ बैक्टीरियाज आपके उनमें चेंजेस थे इन केस ऑफ ओरेक्टोमी में विद रिस्पेक्ट टू योर कंट्रोल। ठीक है, फिर हमने ह्यूमंस में भी किया, उनकी जो डाइवर्सिटी देखी, जो शैनन इंडेक्स होती है, काउ इंडेक्स होती है, अगर आपने पढ़ा इकोलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा, तो डाइवर्सिटी आपकी अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, ये सारी डिक्रीज हो रही, कम्युनिटी रिचनेस, डाइवर्सिटी, ये सारा बैक्टीरियाज का आपका कम हो रहा है ऑस्टियोपोरोसिस में, उनकी एबंडेंस भी कम हो रही है। फिर आपका ये डिफरेंट एनालिसिस करके वी डिड केम टू द पॉइंट दैट ऑल दोज थिंग्स व्हिच वी हैव ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ योर माइस was also showing equivalent validation in case of your humans। ठीक है, तो ये क्लिनिक्स में भी हमने करके देखा और ये हमें पता चला। सो नाउ कमिंग अल्फा डाइवर्सिटी को हमने क्या किया, प्लॉट किया बीएमडी के साथ, तो डायरेक्ट कोरिलेशन था, पॉजिटिव कोरिलेशन। देखो आपका ग्राफ सीधे है, डाइवर्सिटी ऑफ द गट माइक्रोबायोटा बीएमडी स्पाइन की भी और फीमर की भी, जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन और स्पाइन जहाँ पे फ्रैक्चर सबसे ज्यादा वही होते हैं, हिप फ्रैक्चर्स एंड योर स्पाइन फ्रैक्चर्स। तो जितना अच्छा आपका डाइवर्सिटी होगी उतनी अच्छी आपकी बीएमडी है। तो डाइवर्सिटी गई, बीएमडी नेगेटिव मतलब कि फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़े। समझ गए आप? सो दिस इज हाउ अब हमें मिला क्या, गट इन्फ्लेमेशन ज्यादा है, अच्छे बैक्टीरियाज कम है, गंदे बैक्टीरियाज ज्यादा हैं, डिसल्फोबैक्टीरिया, क्लॉस्ट्रीडियम कम है, लैक्टोबैसिलस कम है। तो ये ऑल दीज थिंग्स, तो बैसिलस, तो हमने सोचा कि क्या हम अगर गट माइक्रोबायोटा को वापस से रिवर्ट करके एक हेल्दी लेवल पे लेकर के आए, सो वेदर दैट विल बी बेनिफिशियल। सो अब इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या था कि हम जो बैक्टीरिया कम हो रहा है वो खिला दें ऊपर से प्रोबायोटिक्स के फॉर्म में। वही हमने किया। तो हमने एक बैक्टीरिया खोजा, बैसिलस कोआगुलेंस, ये हीट स्टेबल बैक्टीरिया है, स्पोर फॉर्मिंग है, हीट स्टेबल है, आप उसको आसानी से रेफ्रिजरेशन करने की जरूरत नहीं। याकुल्ट को आपको फ्रिज में रखना पड़ता है, इसको फ्रिज में नहीं रखना है। ठीक है, और ये हीट स्टेबल है, इसमें आपका जेनेटिक ट्रांसफर भी नहीं होता, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ट्रांसफर भी नहीं होता है, और आसानी से आप उसको कहीं भी पॉकेट में लेकर के 30-40 डिग्री सेल्सियस तक भी रख सकते हो आसानी से। प्लस ये ग्रास स्टेटस है, मतलब जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ बैक्टीरिया है ये फ्रॉम एफडीए। सो इससे कोई आपको किसी भी और तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। सो वी गॉट इट फ्रॉम अ कंपनी, वी आस्क्ड देम टू मेक इट फॉर अस, और हमने फिर उसकी थेरापी शुरू की। इसी एक ग्रुप हमने माइस का बढ़ा दिया, कंट्रोल, ऑस्टियोपोरोटिक और ऑस्टियोपोरोटिक प्लस प्रोबायोटिक्स। इसको फिर हमने ओरेक्टोमी करने के साथ साथ ही शुरू कर दिया, 60 दिन तक दिया। और आप देखो ये आपका ऑस्टियोपोरोटिक माइस है, ये कंट्रोल है, ये ऑस्टियोपोरोटिक है, और ये वाला है। तो यहाँ से कंट्रोल, ये कंट्रोल है, ऑस्टियोपोरोसिस आपकी डेवलप हो गई, मॉडल सही डेवलप हुआ है, और जैसे प्रोबायोटिक्स खिलाया वापस से कंट्रोल की तरह दिख रहा है, रिवर्ट हो गई है। देख रहे हो आपका यहाँ पे जालियाँ ज़्यादा हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस पोर्स छन्नी के जैसे यहाँ पे ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। ये कंट्रोल है, ये आपका ऑस्टियोपोरोटिक है, यहाँ पे भी जाली ज़्यादा है। और ये आपका जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हो उसका प्रोबायोटिक के साथ, तो बेटर, तो आपका बीएमडी बढ़ रहा है, सारे पैरामीटर्स जो बोन के हैं ना वो बेटर हेल्थ हो जाए। हमने माइक्रोसिटी की, माइस का माइक्रोसिटी है, इसके पैरामीटर्स हैं। फिर हमने देखा कि बीरेक्स क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं, अभी हमने आपको दिखाया इम्यूनोलॉजी में, तो क्या बीसी बीरेक्स के थ्रू अफेक्ट कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट ये था कि बीसी एक्ट कैसे कर रहा है प्रोबायोटिक्स। जो हमने वो गट इम्यून बोन एक्सेस की बात की, तो क्या इम्यून सिस्टम पे पहले बोन पे तो अच्छा इफेक्ट दिख रहा है हमको सीधे सीधे,
इम्यून पे क्या है, तो हमने देखा कि बीरेक्स के जो नंबर जो कम हो गए थे ऑस्टियोपोरोसिस वो सब हाई हो जा रहे हैं प्रोबायोटिक्स देते से ही। टीरेक्स उसका आइल-10 का जो सिक्रेशन था वो भी ज्यादा हो गया, देखो क्योंकि आइल-10 के थ्रू बीरेक्स एक्ट करता है, ये भी आपका ज्यादा हो गया। ठीक है, फिर जो साइटोकाइंस थे जो कि ऑस्टियोक्लास्टोजेनिक साइटोकाइन होते हैं जो ऑस्टियोक्लास्ट बढ़ाते हैं, जैसे आइल-6 वो भी कम कर दिया इसने प्रोबायोटिक्स में, टीएनएफ अल्फा वो भी कम कर दिया, आइल-17 जो टीएस-17 सीक्रेट था वो भी कम हो गया। अब जो एंटी ऑस्टियोक्लास्टोजेनिक साइटोस हैं जो आपका कम करता है ऑस्टियोक्लास्ट को कम करते हैं, आइल-10 आपका बढ़ रहा है और आइफन गेमा जो टीएच1 से आता है वो भी बढ़ रहा है, और आइल-10 जो कि बीरेक्स जो टीरेक्स दोनों सीक्रेट करते हैं वो भी आपका वापस से इनहांस हो रहा है। सो दिस इज हाउ, इसका मतलब बीरेक्स को इनहांस कर रहा है प्रोबायोटिक्स ट्रीटमेंट। और बीरेक्स को हम देखना चाहते थे क्या इसने बीरेक्स का जो फंक्शन था एंटी ऑस्टियोक्लास्टोजेनिक उसको इफेक्ट किया है, तो हमने फिर माइस में से निकाल के बीरेक्स उनके साथ को कल्चर किया ऑस्टियोपोरोटिक वाले में से, और ऑस्टियोपोरोटिक में तो नहीं इनिबिट कर पा रहे थे ये, लेकिन जैसे ही हमने उन वाले ऑस्टियोपोरोटिक माइस में से निकाला जिसको बीसी खिलाया हुआ है वो वाले बीरेक्स इनिबिट कर रहे थे, देखो आप ऑस्टियोक्लास्ट को। इसका मतलब ये जो प्रोबायोटिक्स खिलाने से जो बीरेक्स का नंबर और फंक्शन दोनों हमारे वापस नॉर्मल लेवल्स की तरफ जा रहे हैं, और उनके फंक्शन जो कॉम्प्रोमाइज हो गए थे वो रिटेन हो गए, रीगेन हो गए, रिवर्स हो गए, और उनका नंबर और फंक्शन दोनों हमारे रिवर्ट हो गए। दिस इज फाइन। फिर उनका इम्यूनोसप्रेसिव पोटेंशियल भी हमने चेक किया था ना कि ये टी सेल्स को इनहिबिट कर पा रहे हैं कि नहीं, यस, तो टी सेल को अभी इनहिबिट कर पा रहे हैं, ठीक है, अच्छे से कर पा रहे हैं। प्रोलिफरेटिव इंडेक्स यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे 67 कहीं कर नहीं पा रहा था, और टॉमी वाला बिल्कुल नहीं कर पा रहा था, ये थोड़ा कर रहा था, ये भी देखो 67 के आसपास खिलाने के बाद ये भी कंट्रोल की तरफ बिहेव कर रहा है। ये सीएफएससी सप्रेशन ऐसे होता है, ओके। और इनका जो इम्यूनोमोडुलेटिव पोटेंशियल अब हमने देखा टीरेक टी17 का क्या स्टेटस है भाई, क्योंकि बीरेक टीरेक को बढ़ाना चाहिए, टी17 को घटना चाहिए, तो क्या इन वाइवो ऐसा हो रहा है? तो बोन मैरो हमने देखा तो टीरेक एक्चुअली बढ़ रहे थे और टी17 कम हो रहा था, जिसमें हम तो हमारा पूरा जो एक्सेस था बीरेक्स, टीरेक्स, टी17 ये सारा के सारा जो ऑस्टियोपोरोसिस में डाउन हो गया था वो वापस से खिलाने पे रिवर्ट हो जा रहा था। दिस इज फाइन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, सो हमने फिर ये कहा कि चलो भाई बैसिलस कोआगुलेंस जो एनहांस कर रहा है गट इंटीग्रिटी को भी वाया मॉड्यूलेटिंग बीरेक टीरेक टी17 एक्सिस। तो गट इंटीग्रिटी की जो बात हम कर रहे थे लॉस हो गई है, ये देखो आपको एटॉमी में लेंथ कम हो गई, लेकिन इसको खिलाने वाले पे वापस से ठीक है। और जो इंटीग्रिटी जो कोलोन लेंथ कम होती बढ़ गई, गट इंटीग्रिटी जो फिटसी डेक्सट्रान ज्यादा हो गया था वो भी कम हो गया, इसका लीकीनेस कम हो गई, लेंथ भी नॉर्मल हो गई। और गट के जो बीरेक्स हमने निकाल के देखे पेस पैचेस में से इस बार, उसमें भी जो एटॉमी में बढ़ गए थे 4 से 8 हो गए थे वो 5 हो गए, कम हो गए, ठीक है, तो भी बेटर हो गए आपके, ठीक है। सो बीसी देने के बाद आपका जो पॉपुलेशन ऑफ बीरेक्स की थी वो, सॉरी ये दूसरी पॉपुलेशन है, यहाँ पे आपकी वो बढ़ गई, जो कम हो गई थी वो बढ़ गई, ये सारी की सारी देखो, ठीक है। यहाँ पे आपका बीरेक्स जो आपके कम तो टी17 की है यहाँ पे, और टीरेक्स है, टीरेक्स कम होते वो बढ़ गए, टी17 बढ़ा हुआ था वो कम हो गया। ये सारा का सारा हम गट की बात कर रहे हैं, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू पेयर्स पैचेस में देख रहे हैं, जो नियरेस्ट आपका गट के बगल में लिम्फोइड ऑर्गन है सेकेंडरी, ठीक है। अब बातें हैं मेटाबोलॉमिक्स में, ये तो हम जीनोमिक्स की बात की कि हमने 16S कर लिया, अब हम मेटाबोलॉमिक्स, क्योंकि अब बीसी कैसे ऐड कर रहा होगा, बीसी खुद से तो अंदर ही गट में ही है, तो कैसे बीरेक्स को, टीरेक को, टी17 के फंक्शंस को कैसे वो मॉड्यूलेट कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था। तो हमने इसके लिए क्या किया, हमने माइस लिए, माइस के सारे 0, 15, 30, 45 डेज के जितने भी थे फीकल मैटर, उसको लेकर के उसका मास स्पेक एनालिसिस की, मास स्पेक्ट्रोमेट्री पे गए, अनटारगेटेड, पता है ना मास स्पेक क्या होता है। तो हमने क्या किया, एनालिसिस की, फिर हमने हीट मैप, जो हमारा जो नेट डेटा आया वो ये आया कि मेटाबोलाइट, जिसको कि हम गट एसोसिएटेड मेटाबोलाइट्स कहते हैं, नाम दिया हुआ है, उसमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का मेटाबॉलिज्म ऑस्टियोपोरोसिस वाले माइस में कम हो गया था, बाइल एसिड्स भी कम हो गए थे। एचसीएफएस आपको पता है, एसीटेट, ब्यूटारेट, प्रोपेनेट, वैलिडेट, ये 4 तरह के होते हैं जो कि हेल्दी माने जाते हैं, ओके। दीज आर फर्मेंटेड फूड्स में ज्यादा होते हैं, जहां फर्मेंटेशन होता है, इसीलिए फर्मिक्यूल्स बैक्टीरिया हमारे कम हो गए थे ऑस्टियोपोरोसिस में, क्योंकि ये भी कम हो गए हैं हमारे मेटाबॉलिक एनालिसिस में। अनटारगेटेड किया, टारगेटेड किया ही नहीं है, बहुत डेटा था। सो फिर ये हुआ कि ओके, अगर ये एचसीएफएस कम हो गए हैं तो क्या हम इस एचसीएफएस में से कोई एक ले लें और उसको डाल के देखते हैं क्या वो बैसिलस कोआगुलेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो हमने पहले, उससे पहले क्या किया, जो एचसीएफएस चारों थे ना, जैसे एचपीएलसी जो हमें मिले सब बढ़े हुए थे, एचपीएलसी भी करके देखा फिर टारगेटेड, उनके सीरम में और फीकस में एचपीएलसी से आपका एसीटेट, प्रोपेनेट, ब्यूटारेट सारे बढ़े हैं कि नहीं है। तो हमको देखो एसीटेट, ब्यूटारेट सारे के सारे हमारे
BC खिलाने के बाद बढ़ गए थे, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस में कम हो गए। तो हमने क्या किया, इन सबके साथ, सारे से फेस के साथ एसीटेट, प्रोपेनेट, ब्यूटारेट को डाल करके ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर देखा। तो अब देखो एसीटेट कंसंट्रेशन जैसे बढ़ रही है, ये सारे के सारे इनहिबिट कर रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा ब्यूटारेट है, जो कि इवन एट लोअर कंसंट्रेशन आल्सो इट वाज एबल टू इनहिबिट ऑस्टियोक्लास्टोजेनेसिस। सो ये आप देखो, तो सबसे अच्छा मॉलिक्यूल हमें ब्यूटारेट लगा, जो कि कम कंसंट्रेशन पर भी इट वाज वेरी इफेक्टिव। सो वी थॉट दैट मीन्स कि ब्यूटारेट कुड बी द मोस्ट इफेक्टिव शॉर्ट चेन फैटी एसिड, and we can actually select that short chain fatty acid and we can give that directly to the mice. So we next approach that. हमने क्या किया कि SCFAs का नॉट ओनली ऑन क्लास्ट पे, बीरेक्स को भी बढ़ा रहे थे, टीरेक को भी बढ़ा रहे थे, TS17 कम कर रहे थे, ठीक है। तो इसके बाद हमने सीधे सीधे माइस पे आ गए हम। तो एक माइस कंट्रोल, एक ओरेक्टोमी, ऑस्टियोपोरोटिक, और तीसरा वाले को हमने सीधे प्रोबायोटिक्स, वो प्रोबायोटिक्स की जगह अब यहाँ ब्यूटारेट दिया, बिकॉज वी थॉट कि ब्यूटारेट कुड बी मोर इफेक्टिव। So when we gave butyrate, we were having similar effect, जैसे कि हमने उस Bacillus coagulans के साथ, यहाँ पे देखो आपका ये और भी बेटर था, कंट्रोल से भी अच्छी इसकी बॉन्ड डेंसिटी है, देखो आप यहाँ पे। So it is having a better parameters and the कंट्रोल से कंपेयर करो तो कंट्रोल से हर मामले में अच्छा था, ब्लू और ग्रीन, हर मामले में it was even better than the control. That means कि it is actually could be the molecule of interest that could be used for a therapy in case of your osteoporosis. ठीक है। फिर अब हमने इसमें क्या किया कि जो पोस्ट मेनोपॉजल विमेन होती क्लिनिक्स में, उनका ब्लड लिया, उससे हमने ऑस्टियोक्लास्ट बनाए और उसमें ये ब्यूटारेट डाल के देखा, सारे एससीएफए उसमें ब्यूटारेट सबसे इफेक्टिव है। इसका मतलब जो माइस का डेटा है दैट कुड बी इक्वली पॉसिबल फॉर योर ह्यूमंस आल्सो। नॉट ओनली ऑस्टियोक्लास्ट, ये ऑस्टियोब्लास्ट का जो फॉर्मेशन है बोन का वो भी बढ़ा रहे थे इन विट्रो, जो कि एलिजारिन रेड से आप कर सकते हो। तो ये एलिजारिन रेड स्टेनिंग है, जो कि आपका बोन नोड्यूल फॉर्मेशंस को स्टेन करती है इन कल्चर्स में। ये बोन मैरो से निकाला, पेशेंट्स का बोन मैरो लिया जो नीम प्लांट के लिए आते हैं, बोन मैरो से MSCs बनाए और MSCs से हमने ऑस्टियोब्लास्ट बनाए और उसमें हमने फिर ये SCFAs डाले और उसमें देखा कि ओके दिस वाज एबल टू एनहांस ऑस्टियोब्लास्ट। तो खाली ऑस्टियोक्लास्ट कम नहीं कर रहा था, ऑस्टियोब्लास्ट का भी फॉर्मेशन ये हाई कर रहा था। अब आती है सेफ्टी प्रोफाइल कि क्या सेफ होंगे। तो हमने जो माइस को दिया था उनकी सारी हिस्टोलॉजी फॉर ऑल द किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन की हुई है और कोगुलेंस वाला इज फाइन टू बी ऑलमोस्ट सेफ, क्योंकि जितने भी एग्जिस्टिंग थेरापीज हैं फॉर ऑस्टियोपोरोसिस दे हैव सीरियस ड्रॉबैक्स। कुछ कैंसर्स करते हैं, कुछ आपके इनहांस 1-2 साल बाद कंटिन्यूस यूज से फिर से बोन लॉस करने लग जाते हैं। ऑल बिसफॉस्फोनेट्स, एलेंड्रोनेट, जोलेंड्रोनिक एसिड, ट्राइपाराटाइड, डेनोजुमैब, रोमोजुमैब, दे ऑल हैव different problems. So we thought कि we will also go for these safety profile, and histologically and morphologically we were not able to find any differences in these critical organs, but still more detailed analysis is awaited. We are still undergoing that. तो हम इसको थेरापी को we have already taken for a clinical grant, clinical trial हमारा ये चल रहा है, 6 महीने हो गए. So we have made the cocktail of some of the probiotics in a lab and we are giving it to the patients. ठीक है, at PGI Chandigarh and AIIMS Delhi. So we are having clinical trials at these 2 sites. We have already enrolled number of patients. और 6 महीने हो गए, हमें डेटा तो अच्छा मिल रहा है कि that they are actually showing signs of improvement. उनका पेट तो अच्छा हो गया, दे वापस दौड़ के आते हैं दवाई लेने के लिए दोबारा कि जो भी दिया सब दे दो, हमारा पेट तो अच्छा हो गया। पहली चीज़, जब गट इज एनहांस, गट के फंक्शंस एनहांस होंगे तो डेफिनेटली इम्यून सिस्टम और बोन भी एनहांस हो जाएगा। वो हम 1 साल पर ही देख सकते हैं कि डेक्सा करना पड़ेगा, डेक्सा रेडिएशन होता है थोड़ा सा, तो हम उनको बार बार, और 1 साल लगते हैं बोन में चेंजेस को, सिग्निफिकेंट चेंजेस को देखने के लिए इन ह्यूमंस में। तो हम 1 साल से पहले देखने का कोई मतलब नहीं है हर महीने। सो वी हैव टू वेट फॉर अ ईयर, सो वी विल वेट फॉर अनदर 6 months and see how this clinical trial is going on, and then only we can recommend the government of India okay this is working fine and we can make a probiotics mixture and we can give it to all the women, especially at all the public health centers, PHCs across the nation. Free of cost, these probiotics should be given just like iron and other supplements are being given, so that we can reduce the bone loss burden. Huge economic burden है, 200 बिलियन का, 250 बिलियन का हर साल का खर्चा है ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड economic burden. US का लोन, इंडिया तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, यहाँ पे उसका इकोनॉमिक बर्डन और ज़्यादा। जो लोग बैक पेन हुए तो छुट्टियाँ ले लेते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, तो वो लॉस है, लॉस ऑफ वर्किंग आवर्स, लॉस ऑफ इकोनॉमी, लॉस ऑफ इकोनॉमी आपको भी और आपके देश को भी, जिसकी GDP हमारी कम होगी। ठीक है, तो ये अगर हम सोचें कि प्रोबायोटिक्स अगर हम फ्री में बांट दें तो ये सारी चीज़ें सिग्निफिकेंटली कम हो जाएंगी, और 250 बिलियन का अगर बर्डन है, हो सकता है 50 बिलियन का ही रह जाए। तो जो 200 बिलियन हमारे बचेंगे
उसमें सिर्फ 10 बिलियन में प्रोबायोटिक्स फ्री में बांट सकते हैं, तो हमारा फ़ायदा होगा अगर हम इसको करते हैं, तो घाटा है ही नहीं। और आपका भी हेल्थ हो जाएगा, वोट बैंक भी अच्छा हो जाएगा कि हमको सबका हेल्थ भी सही हो गई, पैसे भी बच गए, तो इससे अच्छी तो कोई थेरापी नहीं हो सकती। तो इसी तरह से मेरे को लिखना पड़ेगा, दिस आपका ये पैसा बचाएगा और आप टारगेट कर सकते हो पॉपुलेशंस को, वोट भी आपको मिल सकते हैं, और इसलिए इसको हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। सो तुरंत गवर्नमेंट को समझ में आ जाएगी बात एक ही लाइन में, एंड दे कैन मे बी consider osteoporosis also a major health concern in the country so that we can target it up. Okay, so हम लोग का काफ़ी, so we have been also in the top 2% of the list of the scientists, and we have been on the cover page of Immunity Journal because of this research. We have been establishing this osteoporosis research. We have established gut immune bone axis. We are the pioneer in that. Established Treg TH17, then BREX, then TH17, TH9, then immunotherapy. We have got various awards from AIMS itself. We have been in various newspapers also for all of these research. Some of them are here. And thank you for this. All this is there. So this is my small group of people who have been doing all this hard work. यही करते हैं students, postdocs, students in the lab. ये कुछ पुराने postdoc students हैं जो कि एक एमरी में हैं. ये सागर से था. This was Sagar. He's in Jammu, and she wasn't from AIMS. She's in Mayo Clinic in one of the labs. Thanks to all the collaborators, lot of collaborators across India and the world, and all funds के बिना तो कुछ नहीं होने वाला है. So we are funding from almost all of the funding agencies, huge funding in there, more than 30 crores are there in the lab. So we have all these things from DBT Welcome Trust, DBT, Ayush, ICMR, AIMS. So all the funding agencies we have worked for, and we are still having the highest funding in the lab. So this is all about the research which we are doing. Hopefully आपको थोड़ा सा मैंने was able to give some idea about what is happening in your, it is well within the theme of your GIAN workshop, multi-omics and your endocrinology and multi-omics. So thank you for listening to me. If you have any concerns, have any questions, you can ask me up. So hopefully आप सबको समझ में आया होगा. Yeah, tell me. What is the future therapy of MSC cells, as this is a stem cell and regenerative cell? So as like HSC cells and other, we are focusing on osteoblasts. Then in future, what is the therapy might be useful for the public health on targeting MSC cells? So MSCs we are already working. What we have done is that we are taking a growing MSCs. We are isolating their extracellular vesicles, EVs. वो निकालकर we have already given to the mice, and we have seen very good results. We have a collaboration with University College London, and we have made formation from umbilical cord stem cells के भी derived हमने EVs बनाए हुए हैं, MSCs के भी बनाए हुए हैं. They are equally effective. कुछ better हैं कुछ parameters में, so that work is already going on. So plus apart from that हम भी plasma से derive कर रहे हैं या serum से derive कर रहे हैं EVs from patients में भी. So see what is the difference between control and patients. और फिर उसके अकॉर्डिंगली वी कैन यूज देम फॉर अ डायग्नोस्टिक मार्कर्स और मे बी फॉर अ थेरापी ऑल्सो. उनके कंपोनेंट्स अगर कुछ हमारे माइक्रो आरएनएज हैं जो कि हाई हैं या कम है, वी कैन मेक देम एंड वी कैन गिव टू द माइस. दिस इज ऑलरेडी वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स व्हिच इज गोइंग ऑन इन द लैब. ओके, या. These are basically found in adipose tissues. Yes. So adipose tissues are primarily everywhere in major organs. So can we connect MSCs with the like neurological disorders because the in neurological cell adipose tissue and the MSCs are also present there. So can we connect these MSC cells with the neurological and the bone disorders? So there is a link, strong link between your nervous systems and your bone also. Yes. So what we have done is that जो मैंने आपको stress वाला example दिखाया था. So the gut has their own enteric nervous system. Yes. Okay. So gut का enteric nervous system is basically your brain. Yes. Linked with the brain directly. So gut is actually being under control of your brain. So a lot of hormones are there. जब से आप देखो जैसे एग्जाम देना जाता है बहुत लोग घबरा जाते हैं, डायरिया हो जाता है. Yes. ठीक है, वॉमिटिंग हो जाती है. एनी स्ट्रेस इज देयर, ब्लड देख लिया, वॉमिटिंग होना शुरू हो गई, पेट खराब हो गया. So brain and gut are directly linked. So that we have developed a UCMS mice model जिसमें कि स्ट्रेस हम देते हैं माइस को at different stress है, not only one stress, क्योंकि stress कुछ भी हो सकता है. So it's a combination of stress. So we have seen a strong bone loss in case of these mice. ठीक है. अब MSCs की बात है तो MSCs की आप देखो तो बोन मैरो में भी ढेरों MSCs हैं.
So what we have found is that in osteoporotic patients and mice, जो मैरो की एडिपोसिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है, वी हैव सीन दैट। तो एडिपोसाइट्स की तरफ ना कि ऑस्टियोब्लास्ट की तरफ ना जाके वो समाओ ऑस्टियो मतलब एडिपोसाइट्स की तरफ उनका कन्वर्जन एमएससीज का ज़्यादा होने लगता है इन केस ऑफ योर ऑस्टियोपोरोसिस। तो दिस व्हाट वी हैव ऑलरेडी पीपल आल्सो नो एंड वी हैव आल्सो ऑब्जर्व दैट, बट वो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स थे, तो वी हैवंट टेकन अप द एडिपोसाइट वाला एक्सेस, बट वी डू नो कि दैट दिस हैपेंस। प्लस एडिपोसाइट्स में बहुत ढेर सारे इम्यून सेल्स भी हैं जो रिसेंटली डिस्कवर्ड हुए हैं, टी सेल्स आर देयर। So we are interested in that कि maybe from adipocytes we can isolate these immune cells and see कि what is happening between your osteoporotic and your control patients. So maybe that could give some answer कि what is happening with your adipocytes. So that could be maybe one of the things which we need to look into. Okay? Yeah. Can we link like genomics of MSC cells, like role of, because MSC cells are not like they are stomatal cells, not like germ cells, so they are not transferable. So is there is a like link of genotype, genomics of like variations in gene mutations in the Osteoporotic. MSC cells, mutation of MSC cells, and that could lead to other diseases. That can be done actually. So that is an important thing, and GWAS जो करते हैं ना वो genome wide association study, वो GWAS के थ्रू मे बी पीपल हैव लिंक्ड दैट, या अगर ऑस्टियोपोरोसिस में आई होप कि बहुत ज़्यादा काम हुआ नहीं होगा तो वो कर सकते हैं, बट वही है कि हमारा थोड़ा मैंडेट अलग है, GWAS हम करते नहीं हैं, बट वी नो कि वो करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें अच्छा मिलेगा। We can look at the various mutations also between osteoporotic and non-osteoporotic individuals. So that could also give us some hint, और उसमें एसोसिएशन स्टडी से फिर हम इम्यून वाली चीज़ें देख सकते हैं। सो सम ऑफ द स्टडीज हैव ऑलरेडी बीन डन, बट वो इंडियन पॉपुलेशन में डेफिनेटली नहीं हुई है, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, वी हैव अ कोलैबोरेशन विद चंडीगढ़, दे आर इंटरेस्टेड इन GWAS स्टडी फॉर द ऑस्टियोपोरोटिक, लेकिन वो डायबिटीज़ वाला ऑस्टियोपोरोसिस पे है। सो दे लुक इनटू द डॉक्टर भडाडा का ग्रुप है वहाँ का, सो दे आर लुकिंग कि डायबिटीज़ कैसे ऑस्टियोपोरोसिस को एनहांस करता है, तो उसमें वो GWAS देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू योर डायबिटीज़। तो मे बी उसी डेटा में वी कैन पुल आउट सम ऑस्टियोपोरोटिक डेटा ऑल्सो, क्योंकि जीन्स तो सारी होंगी सीक्वेंसिंग। ठीक है, दैट कैन बी लुक्ड इनटू। एनीवन एल्स? सबको समझ में आ गया? कोई क्वेश्चंस नहीं, इसका मतलब सब समझ गए, और क्वेश्चंस हैं तो उसका मतलब समझ रहे हैं। ठीक है, या तो सो गए या सब समझ में आ गया। चलो, थैंक यू। ओके, या
Okay, so where is my slide? Oh, this is the one. Okay. 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 Yeah. Okay. Thank you. Okay. Good. Well, because of the guest speaker, we need to move around a little bit. Okay. So today we will have 2-hour lecture. The first one, I'm going to give my first hour and the second hour for today. Then tomorrow, I'm going to give you a roundup, show you an example how we are doing the experiment, the integration of signal. The signal include the steroid hormone, the redox, the tyrosine phosphorate, all into one experiment. Okay, so it will be an example for you tomorrow. But today, I think I'm going to continue to, let me see where it is. Okay. Yeah, so we are going to go through, review the cell cycle and then say biochemical basis of the cancer. Then after the lunch, we are going to talk about the signal in the cancer and how can we develop targeting therapy. Okay. So again, this is one just to remind you, refresh our memory. The biology interaction is very complicated. They are integrate, they crosstalk every possibility. Okay, so this is a slide I'm going to ask you why we have the what is the principle or the theme of the targeting therapy, what it is. So can a cancer be cured? This actually will be the question I'm going to we are going to discuss. Can we cure a cancer? Besides, okay, beyond the surgery, if we treat the patient with a different kind of chemo reagent, different kind of drug, can we cure the cancer? You can think about this possibility. Okay, can we do it? It's really a question we deserve us think it carefully. Okay. Well, okay. So what is the difference between a cancer cell and a normal cell? So this one is some sort of I summarize the key difference between the two cell types. Okay. So one thing we all know, the cancer cell, what the cancer cell means, they can keep dividing, keep growing. And then the normal cell is otherwise actually different. They have contact inhibition, as we sometimes talk about this in the past couple of days already. The cancer cell keep growing, they can pile it up, but in the culture dish, for example, in the culture dish, the normal cell has the contact inhibition. So when they form the monolayer, then they cannot grow anymore. But the cancer cell can grow, keep piling up multi-layers, okay, like a piece of like a tissue, like an organ to us. That we can culture the prostate cancer cell in the right condition. They will grow like an organ. So what's very confusing, very sharp. Yeah. Then the second is the cancer cell grow very rapidly, okay? So when in here, say, too rapidly to mature, they just keep growing, keep dividing, so they cannot be to the final mature stage. So they are not well differentiated. So we know that normal cell to an end, they will have the differentiation state we call the well differentiated cell, but not the cancer cell. Usually the cancer cells are the poorly differentiated. So the normal cell will mature into distinct cell type.
with a specific function. That's the normal cell, what they are doing. The muscle cell, for example, the brain cell, they all have very specific function. They go to differently. But the cancer cell, they divide very quickly and may not have the chance to mature. So, yeah, they are usually poorly differentiated cells. So the cancer cell can influence the normal cell. Okay, so they will influence the normal cell. They will affect their behavior. For example, when the cancer cell to grow for metastasize, they need to form the new blood vessels. They need to form the new blood vessels. So because the new blood vessel can provide them with a nutrient, then the cancer cell can continue to grow. So this is a mechanism for their metastasis. Then another important point, actually, this we discussed, some sort of mention is cancer cell will trick immune response system. Okay, they will trick the immune response. So classically, we call it immune surveillance system. So the immune system can cannot recognize the cancer cell. They cannot recognize. So then the cancer cell can continue to grow. So one of the mechanisms have a lot of study going on recently. As I mentioned also, is the cancer cell on the surface highly negative charge by the expression of the sialic acid, or you call nilaminic acid. Okay, it's a sialic acid. So that's a negative charge carbohydrate. When they cover highly in a molecule or on a whole cell, then the cell will sometimes lose the recognition. So then they can escape from immune response. So also there's one possibility, as one of the students mentioned, say whether the loss of the phosphatase, then the immune response may not complete, or we lose immune response, then the cancer cell can survive. It's also possible. So the paper actually very nicely show me is yes, they can do that in the animal, but unfortunately we need to have a clinical correlative, because it doesn't matter how all the animal experiment or the cultural experiment, we call those in vitro, may not refer to in vivo in this condition. Okay, so we need to have clinical sample, see whether that is the case. Then cancer cells usually very invasive, very aggressive. They can invade tissue, not only nearby in here, they can be distant. So that's called metastasis. Then usually we call some people sometimes call the cancer cell as a tumor. Okay, we call the tumor. So when you mention the tumor, you got to put down the malignant tumor. Then that is a cancer. But you say this is a benign tumor, then that is not a cancer. So what's the difference between the two? Malignant versus benign. What's the difference between the two? Yeah, benign, they don't spread, they don't metastasize. They just grow in the same spot, keep increase the size. But malignant, they actually spread out. And that is a mechanism cure a patient. Okay, if only the local one, you can just remove it. It's no big deal. But when they keep bigger and bigger and metastasize, then they can go to every single organ, the whole body, spread out the whole body. Then that will cause organ failure, then kill the patient. So this is one of the major difference in their property. Okay, a tumor versus a benign tumor. So for example, in prostate, we have two major tumors in prostate. One is we call the BPH, benign prostate hypertrophy. So that is a benign tumor. It's just prostate keep growing but bigger. Then the major problem is to block. They will slow down the urination. So you might see your grandfather or grandfather in the midnight, it might keep waking up to go to restroom because
is benign prostate hypertrophy. So every time the urination got a problem, so it's not complete. So they need to go to the bathroom in the midnight many times. But if the cancer is actually, yes, it could do the same thing, but the cancer will spread out to everywhere, can spread out to the brain, spread out to the liver, spread out to any possible, especially the first sign is bone. The first sign for the prostate cancer spread out is a bone pain. Over 70% of prostate cancer metastasizes to the bone, have a bone pain. But bone pain is not only mechanism to cure the patient. Okay, bone pain is not. It's just fluid pain. So we do have a prescription now that can suppress the tumor cell in the bone. We can remove the bone pain, reduce the bone pain. But nevertheless, the cancer cells still metastasize to other organs and kill the patient. So bone pain is one of the symptoms. Yeah, so this is some sort of give you. So every cancer cell have some sort of their preference metastase site. Every cancer cell they have some sort. So in the prostate, the first site is bone, and the local lymph node is bone. Okay, so again, this is cancer cell may spread to the other parts of the body. So that is metastasis. This is very, very important. So here to give example, the breast cancer cell, they can metastasize to the brain. Yeah, they can metastasize. But why we need to know the metastasis? Okay, why we need to know? So remember, is a breast cancer cell metastasizes to the brain. It's still a brain cancer cell. It will not change to a brain tumor cell. No, it's not a brain cancer cell. It's still a breast cancer cell. So the treatment need to follow the breast cancer cell therapy, okay, but not the brain. So that's the reason so important is we need to identify what is the origin of a cancer cell. So the treatment will be totally different. Yes? Excuse me? Oh, brain cancer cell is brain cancer cell. They might have, say, glioma, okay? Or meningioma, that kind of cell. So they are totally different cell type. But the breast cancer cell, they are hormone sensitive. Or they could be hormone resistant, but their treatment totally through the different regimen, totally different protocol. Yeah. The brain cancer cell sensitive different kind of chemo reagent from the breast cancer cell. So the treatment is very important to follow up. So actually, classically, there was a case for prostate cancer. They metastasized to the brain, and the people thought that was a brain cancer cell. So the treatment totally was wrong. The patient actually passed away shortly. Yeah, they have different kind of sensitivity. Yes? Oh, I did not hear clear. Oh, brain barrier. Yeah, they have a way to pass through. Okay, the cancer cells just have a way to pass through the blood-brain barrier, BBB. How? Why? It's quite interesting. We don't like to talk about this in here, but some of the detailed mechanism we still don't know either. So the BBB is similar to the cancer cell. Actually, we can say that is they can follow the bloodstream going to everywhere. So essentially very similar. Yeah, they can go to brain. So like a prostate cancer, they can go to brain. Breast cancer cell, they can metastasize to the brain. Yeah, both of them can go to the brain. Yeah. Okay, so they follow the metastasis pathway. Yes, they can go there. But it's still a breast cancer cell or it's still a prostate cancer cell. So the treatment need to follow the original cell type for the treatment. They cannot follow the brain cell, brain cancer cell. It's just different. Okay? Okay. Oh yeah, so one thing is they are talking about the EMT. Okay, it's epithelium mesenchyma transfers. Okay,
So the epithelium cell will become a mesenchymal cell. They have more mobilization, so on and so on. So there are many mechanisms that can go to the brain. It's very different. So some sort of, yes, we're talking about the BBB. We're talking about especially for the drug. The BBB could be a major hurdle for some drug to go through it. But the cancer cell, they have all the way they can do essentially out of control. It's a yeah. Okay, so this is a very detailed one. It's some sort of old slide, but you can have it as a reference in the future. So it's, again, it's what is the normal cell, the important property of the normal cell, and what is the important property of the cancer cell. So again, the same is a metastasis. This is really curing the patient. Okay, metastasis. This again is really important. Then one thing here, actually, I forget to mention in the previous slides, malignant phenotype is heritable. That means they can transmit to the next generation. So the cancer cell become a cancer cell, doesn't matter how many generations. It's continued. And in reality, they become more and more aggressive. Yeah. Their daughter cell will become more and more aggressive. Usually would not say become more benign. It's not the case. So during the cell division, the cancer cell, because they rapidly divide, they grow rapidly. So usually they will become less and less differentiated. So we become poorly differentiated. So then in that case, they become more aggressive. So it's a heritable one. So this is okay. Any question now between the cancer cell and normal cell before we go through? Yeah. So this is a slide shows the cell division. So in the cell cycle, we can divide into say the interphase and then the cell mitosis. Okay, the mitosis and the interphase. So the interphase actually have different period of time, we call the G1S and the G2. So this is the interphase. How we do it? Because classically, under the microscope, you can see a cell sitting there, and we did not know exactly what happened inside the cell. But then for the mitosis, then we can see it under the microscope. So that's what was the beginning of the nomenclature called the mitosis and the interphase. So interphase is just in between the mitosis. Then later on, then it find out that they have different time period. They actually through the G1S and the G2 period. Okay, so it's the every cycle, every cells, every stage they have different time point. So the S phase is a DNA duplication. So usually it took about 10 to 12 hours. Then the chromosome will segregate into the mitosis. The mitosis, then the cell with non-divided cell are going to the G0 phase. So some cell going to G0 phase will stay there, but some cell will not, will continue to go back to the G1 phase. So the G0 phase is a resting phase. Cell just sitting there. So like a muscle cell, for example, if they develop and then differentiate it, then they go to the G0 phase. They can no longer grow, divided. Like our brain cell, we know we don't get them to divide it. Yeah. Okay. So we don't increase the brain cell number. How many cells it was, then it will continue to be that number. There will be no more cell division. Yeah. So some of it give you an example for the G0 phase, like a neuron or the skeleton fiber. So this is a muscle cell. So they cannot grow and they cannot divide it into the cell cycle anymore. Then the M phase is actually pretty short. It's about 2 hours. Okay. Then they can further divide into 4 states. So these are the 4 states in the cell cycle. In general speaking, we need to know is there's an M phase, G1, G2, G1S, G2 phase. That's the most important.
Then they do have a checkpoint regulating the cell cycle, because the cell need to double check, make sure when they try to divide, they need to replicate all their internal material, right? They need to double check whether they really duplicate faithfully. So that is the checkpoint. So they have G1 phase, they check the DNA damage, the S phase, they check whether it's incomplete of replication. Then the G2 phase, again, double check the DNA damage, then the mitosis. So they, every single phase, they do have different kind of purpose, okay? So this is there are actually a lot of protein involved in the cell cycle. Then the key player are the cyclin, okay, cyclins protein. So they do have different cyclin at a different phase, different period. So to be simple, I usually remember as a DEAB. Okay, cyclin D, cyclin E, cyclin A, cyclin B, and I keep recycling. Yeah. Then so they need to be activated. They will be phosphorylated by a kinase we call the CDK. So the CDK is a pathway regulator. They will promote the cell division, the CDK. So very important here, I use a red color here. The cyclin B form a complex with the CDC2. Then the CDC2 can activate the cyclin B. Okay. Yeah, so it's a kinase. CDC2 is a cell division genetic. So this is abbreviation. Then it's activated by CDC25. Sorry, okay, it's activated by CDC25. But this complex is very important for cell cycle. Then the CDC25 phosphatase will come in and dephosphorate and activate, and the cell can go to cell cycle. So this is the initiation of the cell cycle. Then that described is the square is a cyclin A, there's a G1S phase, and form the complex with the CDK2. A lot of details how they form the complex, but I think the important is here is the cyclin B and the cyclin D and CDC2. They form the complex, then activate by CDC25 phosphatase. So this is a kick on the cell cycle. This is really the key player. Then the cyclin, they do have their different stage, and then after the period of time, they will disappear. They will going up and going down, going up and going down. So therefore, we have a cyclin DEAB over here. Okay. So again, this is all slide talking about how we are talking about the RB gene, retinoblastoma gene protein, and also the P53. So this is, for example, the RB is controlling the G1 checkpoint, RB. Okay, it's a G1 point. Then phosphorylated RB is actually release the transcription factor of the E2F PP. So this the phosphorylation in here actually regulate the RB protein function or the P53 function. Both of two tumor suppressors are regulated by the phosphorylation. So this is show you how is a scheme. Then here the description is hyperphosphorylation of RB inactivate in dissociate from E2F. Okay. Then the hypo or unphosphorylated RB is active form. They inhibit E2F. Then the cell prevent the cell into the S phase. So phosphorylation inactivate activity. Okay. Then the hypophosphorylation or unphosphorylation, then the RB can inhibit the cell proliferation. So that's what RB gene is a tumor suppressor gene, because overexpression of RB, the tumor cell actually will slow down the cell proliferation. So what is the RB? What is the abbreviation? What is the RB abbreviated for? Retinoblastoma. So originally was clone from red eye tumor, retinoblastoma. But then it's find out actually this protein
It's in all the cell, not only in the eyes. Too. Yeah. Yes, RB is overexpression. Wild type will suppress the tumor. Yeah. But if the mutant RB actually become an oncogene, so RB is a little bit of trick. So yeah, oh no, PUT3, that's a PUT3. Yeah, so RB is actually suppressor, tumor suppressor. So there are two major tumor suppressors, RB and the PUT3. Okay, so PUT3 was even called the gardener of the cell. They are actually control, regulate the cell for their growth. Yeah. RB is the same. So this is actually how the RB is doing interact with the E2F transcriptional factor. Then if phosphoryl RB, then inactivate, they will disappear. Then they can go for the cell growth. But your RB is hypo or no phosphorylation, then they will inhibit the E2F. There's no transcription. Then the cell cannot go for cells, cannot go for proliferation. Okay, yeah. So it's a tumor suppressor RB. So as shown here, is RB is a hypo or underphosphorylated during the G2, G1 phase. So it's then the mutate actually RB a lot of mutation or deletion in tumor. So in the new retinoblastoma, actually RB is actually mutated. So that was originally identified the RB. They call it RB gene. That is it. Okay, it's mutated or deleted. So they use a lot of patient sample, and then finally they actually clone it out, fish it out. That's called the RB gene from the retinoblastoma patient sample. So all the cancer research require a lot of patient sample to figure out what exactly going on. Yeah. Yeah. So RB is mutated or deleted in the lot of genes. So that. So the molecular description, I think in here we have it one by one. This will show you how the scheme, how is RB really doing. So also how they interact with the growth factor. For example, this is the TGF beta and then the cyclic AMP. They can all interact with here. Then the radiation DNA damage, that they can regulate the cycle. This is a complex. So some of them stimulation, some of them inhibition. Okay. So this is for PUT3. Yeah, this is a PUT3. So that was RB, now it's for PUT3. So PUT3 protein is in response to the DNA damage. When there's a DNA damage, PUT3 going up. Okay. Then of course it's also so DNA damage here, then it will stimulate the PUT3. Then they will induce the genes for DNA repair. But the PUT3 could be inhibited by MDM2. Then MDM2 could be inhibited by ARF. So all this is really a regulation. When there is a DNA damage, PUT3 going up. So require for the DNA repair. But if there's no way your DNA damage too severe, they no longer can be repaired, then the cell will die. Okay. So actually, this is a PUT3 here, and here is the RB. So how they interact? So the PUT3 can induce the P21 protein called the WAF1. Then they can inhibit cyclin CDK complex. Then the active RB protein will become inactive. So this is the two tumor suppressors actually crosstalk. Yeah, so the PUT3 can regulate RB protein. So this, yeah, so the PUT3 was called the guardian of the genome, a transcriptional factor and the tumor suppressor. Then the wild type PUT3 is a short life, very short life. So if we do the immunohistochemistry staining for the PUT3 protein in the normal cell,
in general speaking, we cannot see the p53. Usually we cannot. But in the cancer cell, the mutant p53, then yes, we can see the p53 standing. Okay. So the mutation, actually, I try to emphasize the mutation of p53 actually become oncogene. So I try to emphasize here is p53 actually was initially identified as an oncogenic protein, was an oncogene, but not a tumor suppressor. Because they clone out from cancer cell. So because associated with the cancer cell and it's a mutant form, but they did not know. Initially we did not know it's a mutant form. Then it associated with the cancer cell, and when you transfer into the normal cell, it will transform them. So we call it the oncogene. But later on, they clone out from normal cell, the counterpart of normal cell. Then bingo, it's a tumor suppressor. So that's what we call the research. More and more we keep rebending the wheel. It's oncogene become a anti-oncogene. So the tumor suppressor was a later on name nomenclature. Initially we call oncogene and anti-oncogene, try to show how they interact, how they counteract with each other. But then anti-oncogene sounds not very good, so they prefer to call tumor suppressor gene. Okay, so the mutant form of the p53, yeah, they can compete with the wild type protein. So the wild type p53 protein cannot suppress the tumor cell. Therefore, the cancer cell can continue to grow. So that was this misleading discovery in the beginning. Said p53 is an oncogene. You follow? The mutant p53 can compete with the wild type p53 for the tumor suppression activity. So the wild type p53 cannot do the tumor suppression activity because the mutant competition, right? So the cancer cell to grow. So that was originally was confused. It was a oncogenic protein. Okay? But later on we found out it's oncogenic protein is actually is misleading. It's not really the wild type. We cannot say what mutant one is an oncogene, then we name it as oncogene. No, we need to consider a protein function for its wild type, but not for its mutant. Okay? So this talking about the DNA virus, how the DNA virus induce the cancer. So the DNA virus has two proteins. They produce two proteins, E6, E7, and it turned out the two proteins, the E7 bound to the RB, then E6 inactivate p53. So if we say both tumor suppressors are inhibited, of course a cell will become a cancer cell. So this is how the DNA virus induces a cancer cell. Okay, so yeah, they have two molecules. One inhibited the another one. So that's why we had the problem to become a cancer cell. Okay, so this is a slide shows what the DNA virus in human cancer. Some of the examples, the HPV, human papillomavirus, or the EBV. So the HPV actually causes the cervical cancer. So in the US, actually now they have the vaccine for HPV. Then it's highly recommend have the teenage female to have HPV vaccine immunization. I don't know whether in this country, but the US, actually the FDA, the FDA is a Food and Drug Administration. Okay, so it's an agency in US federal government regulate all the food, all the drug. Any drug is going to be on market need to be approved by FDA. So the food is the same. They will check
periodically to make sure they are following the guidelines. So actually, yeah, HPV vaccine is available for female to prevent the cervical cancer. So that's why the mechanism here, because they will then the so for example, Kaposi sarcoma associated virus. So this is actually associated related to the AIDS virus. So this virus, the Kaposi sarcoma virus, is strongly associated with AIDS virus. So then they will induce the cancer, Kaposi sarcoma. Then hepatitis B. Okay, so this is another one, very famous hepatitis B. It's well established, I mean not well established, highly prevalent in, I think, the Asian country without hepatitis virus. Mainly to the hepatoma, okay, liver cancer. What is the incidence of the liver cancer in this country? Do you know? Anyone know? High or low? High? Low? Is low. Oh. Yeah, but the reality is hepatoma virus, hepatitis B virus induced hepatoma, it's not really due to their genomic effect. It's not. Yeah, it turned out they use the amyloid protein without inside DNA, then still cause the hepatoma. The patient still will be caused to have hepatoma. So it's really the liver cell being damaged. Okay, like heavy alcohol drinker, the same. And they will damage the liver cell. Then following the time, the damaged liver cell will become a cancer. It's not really the DNA in the hepatoma virus, hepatitis virus is not. Yeah, when the data coming out, everyone was shocked. Say, oh, how come only the amyloid protein can do the same function and also induce hepatoma? Okay, so for hepatitis B is actually a lot. I mean, it's really one of the major causes for hepatoma in the Far East, in the mainland China, the Taiwan, the Japan, in this area. It's a B type, hepatitis B. Then hepatitis C is in US, different type C. So different substrains, they have different region to induce hepatoma. Okay. So this just give you some example. The virus induce the cancer. So this gives you, tell you what is the oncogene doing, what is the tumor suppressor doing. Then in the oncogene, we have the proto-oncogene. What is the proto-oncogene? Yeah. Yeah. Sure. Yeah. The cellular cellular partner of the oncogenic protein. Yeah. So in here, I give an example: C-SAC versus V-SAC. So this is a basic example: C-SAC versus V-SAC. Okay. So actually, Dr. Howard Mermus and Michael Bishop, they proposed cellular oncogene theory. Then both of them are awarded Nobel Prize. Because they proposed that actually oncogene are intracellular in our own body. It's not may not be from outside, it's within. So they call it cellular oncogene. Then indeed, a lot of cancer being induced by our own gene mutation. Like a PUT3, you mutate it becomes oncogenic protein because it compete out the wild type PUT3, then induce cancer. Okay, PUT3. Luckily, RB has no function. RB has no such competition function, only the PUT3. Yeah. Then the V-SAC and C-SAC are a little bit different, but the C-SAC will never transform a cell, a cancer cell.
transform normal cell. We C-sac won't, because the C-sac lost the C terminal, not anchor inside the plasma membrane to do the necessary function. But the V-sac, yes, they have that one C terminal. They can anchor it on the plasma membrane. They can do the job. Okay. Yeah. So the oncogene pathway can promote cell growth, inhibit apoptosis, promote immortalize the cell, angiogenesis, metastasis, and metastasis is really the most important curing the patient. Then the tumor suppressor on the other side of the coin is actually inhibit. Yes, we can use a PT3 to suppress the cancer cell. We can use the RB to suppress the cancer cell. That's the reason that why they are accepted as a tumor suppressor, because they do have a lot of experiment and find out the expression of these two proteins. The tumor really the tumor can really be suppressed, reduced. Okay, so they call the tumor suppressor. So this is another table show you the activation of the cell division and the, or apoptotic resistance. So this actually the proto-oncogene product that regular cell division and could serve as the tumor oncogenic protein. So the PDGF, the platelet-derived growth factor, is actually homologous to the cis oncogene. Okay, cis oncogene. Then, yeah, PDGF receptor and other protein growth factors. So like I did mention earlier, is the growth factor receptor, the most interesting is the HER2. We call the HER2, ERB2, and the NEO represent the same molecule. Just 3 different groups study it about the same time. When they publish, they use their own name. And it turned out they are the same molecule. Okay, so the NEO is isolated from the virus. Then ERB2 is from the cell. HER2, HER2, it actually shows in the human. They say it's a human homolog to these two proteins. So it's called HER2. So this one is important. Is in about 10% of breast cancer cell in human and ovarian cancer cell have amplified of ERB2 or HER2. So in the clinical, when they receive a piece of the tumor from the patient, they will quickly do the chromosome staining identification to see whether there is ERB2, HER2 amplified one. So suppose we should observe 2 spots, okay, by fluorescence, because the duplicate chromosome, right? But if they see more than 2, it's amplified, then they will treat the patient very aggressively. So first one for breast cancer is Herceptin. Okay, we will just talk about this afternoon, Herceptin. And the Herceptin shows very nice, very good efficacy for the breast cancer suppression. But turn out to ovarian cancer is not the case. It's mainly breast cancer. So a lot of questions why. Yeah. Okay, so these are actually some of the example that might be functioning as a oncogenic protein. So the ROS, this is the first human oncogene was cloned. So what is the ROS actually? They clone from the bladder cancer cell, human bladder cancer cell. Express the ROS oncogene. So the ROS is actually there. It's a GTP protein. We call in the signal transduction. I mentioned that that's we call the small G protein, right? It's a small molecule, but we call it GTP binding. So it's a small G protein. Then the GPCR, G protein coupled receptor, is a huge molecule. So we call the large G antigen. Okay, so here is small G. Then the ROS oncogene has 3 members: KRAS, HRAS, and the NRAS. All 3 together actually are happening
their mutation activation happening in about 30 to 40% human cancer. Human cancer, about 30 to 40%, all three together. Yeah, so again, the downstream cyclin, the cyclin-dependent kinase. So even the CDC25 phosphatase, we just mentioned in the cell cycle, CDC25 is a protein phosphatase, and it can be considered as an oncogenic protein because it activates the CDC2 for the cell cycle. Okay, so not all the phosphatase is a negative growth regulator. The CDC25 is actually a very interesting protein. It regulates, promotes the cell cycle by dephosphorate CDC2. Okay, so we talk about the kinase and the phosphatase. We say, yeah, they are counteract each other, but not all the, the counteract on the dephosphorylation is not only mechanism for the phosphatase. They do have their own biological activity, like a SHIP1 phosphatase in B cell development, SHIP2 in T cell development. Okay. So for then the apoptotic protein are related to apoptosis. So there's apoptotic resistant related one. So the BCL2 is one of the BCL2 is actually one of the early study identified involved in the apoptosis. So there are a lot of examples. NF-kappa B, for example, is a transcriptional factor involved in tons of the activity, everything. Yeah, tons of activity. Yeah, it's actually discovered by David Baltimore, and he is also the person identified the reverse transcriptase, David Baltimore. He actually, and he together with Howard Tammy received the Nobel Prize for their discovery of reverse transcriptase. And David Baltimore further than they, in his group, identify NF-kappa B. And that's a very important transcriptional factor in a lot of activity, in many activities. Oh, do I have? Okay, so I think, yeah, so this is what I try to say is Michael Bishop and Howard Burmers get the Nobel Prize because the cellular oncogen. They propose the cellular oncogen hypothesis. Okay, so we're talking about the cancer. Then this is slide to show you health disparity. So the cancer cell has very heterogeneity. We know that. But not only that, there's also the health disparity. So this is some sort of a table to show you some example. For example, the lung cancer cell. Okay, the lung cancer instance. The neurons block. So do you know where's the neuron? It's in the Louisiana state of America. Okay, it's in the southern part next to the Mexico Gulf. And then now the Trump president say, yeah, Mexico Gulf is not good, so he changed the name to American Gulf. But it's on the north side is U.S. State, U.S. territory. On the south is Mexico. So that's what classical called the Mexico Gulf. So the lung cancer actually very high incidence in the New Orleans block. Actually, I was over there for my postdoc in the New Orleans. And then compare with, oh yeah, India. Actually, you have much less. So the difference is 19.4. Difference 19.4. Then, for example, the breast cancer is a lot, the high incidence in the Hawaii, but much lower in the Italy. But this 7.4 different. But prostate cancer is interesting. In Atlanta block, compared with China in Tianjin, the difference 74. Difference 74. But this is all data, okay? I need to tell you, this is all data. The new data, the incidence actually narrowing, very similar now. So
prostate cancer, actually, one is genetic linkage. About 10% of prostate cancer due to the genetic linkage from grandfather to the father to the son. Yeah, they can continue with a genetic linkage, but it's account for about 10%, 9%, 10%. But most of them are not the case. Then food is one of the major one. Okay, the nutrient. So, and the one is we say African American young boy have higher androgen, like testosterone. Then Japanese teenager has low testosterone. Okay, a young man being castrated by anything, when there's no AR function, has no prostate cancer. But then one is the food. Very important is food. American food has a major problem for prostate cancer. The fried chicken, for example, the fried food is really the worst. So because in China, they westernized, especially those major cities in the Shanghai, in Tianjin, in Beijing, they have allowed U.S. Fast chain food restaurant, like Kentucky Chicken, okay? So turn out their prostate cancer incidence going up, equivalent, almost approach to the U.S. instance, almost equivalent to U.S. Reach to the U.S. instance. But in the countryside, yes, because they still retain their original food, not so much fried food. In Chinese food, usually we don't have much fried food. Then the prostate cancer incidence is still low. So one is a food issue. Then not only this kind of comparison, we know it, but in a classical molecular epi study, has been found. Your Japanese move from Japan to Hawaii, then to Los Angeles, then further up to San Francisco, the prostate cancer incidence change wherever they go. If they are moving from Japan to Hawaii, the prostate cancer incidence going up. But if they further move to Los Angeles, but now Los Angeles have a lot of Japanese people, so it's much better. But in classical, there are very few Japanese, so the Japanese food was not so popular. Then the incidence further going down. But if those patients move back, those population move back to Japan, the cancer incidence, boom, decrease. So that was a classical study to show the food really related. During the mobilization, we can see the change in the cancer incidence. And recently is the modernization, westernization of the China. Those major cities, the Beijing, the Tianjin, the Shanghai, oh my goodness, the prostate cancer incidence really approach to African American in US. Okay, so this is the case. Then, for example, the liver cancer is a lot of the same in China, but much less in Canada. Then melanoma, yeah, in the Australia, compared with the Japan, you can see the difference. 155-fold. Because have the sunshine, then the melanoma actually will be damaged by the UV light, right? So then you have a lot of melanoma. Okay, so how we can understand those kind of instances, what is the etiology factor, then we need to try to avoid. So why they recommend you, when you have going to the sunshine, going outside, if the sun is very bright, you need to be careful, put the sunscreen on or put the hat on, whatever you can to protect yourself, to reduce the skin cancer, the melanoma, okay? Especially Caucasian, white American, they are very sensitive to the UV. Yeah. Their cell is very sensitive to UV. So this is to show you exactly how we are talking about the cancer, the heterogeneous cancer, even the racial disparity, different ratios, they have different incidence in here. So, but actually we said the racial disparity, say the New Orleans African American versus Montreal, Mensa say you guys, the difference in part not only the racial disparity,
In part, it could be other factor involved. Okay, in part could be other factor, but just multi-factor put together, we show the racial disparity. That's the term we are using in the U.S. NIH. We call the racial disparity. Why African Americans have very high cancer, especially prostate cancer, but Asian people has much less. So one thing we need to know was, for example, the prostate cancer in Western people, initially, they do have much more multi-focus in the prostate tumor, in the prostate. Okay, so one more time I try to say is, when you get a prostate from a patient at the early stage, then you can see multi-foci, not only one tumor cell, actually multi-foci. Doesn't matter the ratios, but turn out African American or the Western patient, they have more foci than the Asian patient. So in Asian patient prostate cancer, they might have, say, 2, 3, up to 4 foci. But in Western, especially African American, they can have over 5, 8, 9, or 10. They have a lot. So whether that multi-foci could also increase the probability to have the clinical cancer. Is it possible? Because when you have more foci, then there's a higher opportunity the cancer cell will develop, right? Okay? Are we okay? Yeah. So the cancer is a very heterogeneity in general speaking. So again, this shows a heterogeneity of a cancer. You isolate, you get a piece of the tissue. You can find the cancer one might have this kind of mutation, the cancer two might have this mutation. They all have different mutation. Within the same tissue, I need to say within the same patient, they do have this different area, they have different mutation. Okay, in the different locus, different foci of the tumor from the same patient, they are different. So for example, in prostate cancer, they have multi-foci, right? I mentioned multi-foci. So then the pathology developed a method we call the Gleason score, Gleason grade. So they have a chart. They will give a grade for each foci. Then the Gleason score is the two highest grade to combine. So if one foci is a grade 4, another one is a 3, then another one is a 2 or 1 to 4, say 4 foci. Then the score for this tissue is 4 plus 3, 7. But if there is 1 is 5, 1 foci, another spot is 2, then the 2 plus 5 is 7. Okay, so that's Gleason score. Yeah, so that's the only way, because due to heterogeneity of cancer, there are multi-foci. How can we determine them well? Okay, so far, any question? I know the tumor is really, I mean, so far, so many years of the study, I'm very confused by myself too. But at least we can say the cancer-related deaths, the incidence of cancer deaths is actually decreased. So indicating our research, they make the improvement in the treatment, in the therapy or diagnosis, whatever you name it. Okay, so the cancer deaths actually going down, in general speaking. Except only, I think, one cancer, they think the number is going down. Only one cancer. It's a pancreatic cancer. Pancreatic cancer. Yeah. And unfortunately, the number of the pancreatic cancer going up, one could be related to the food, or one is the pancreatic cancer is an internal organ. Very difficult to detect it. So most of pancreatic cancer been identified, been detected already to the advanced stage. So most of the patients die, succumb to this disease. So usually within 2 years, 2-3 years. And luckily, some cancer, they can have better progression.
they can be treated much better. Yeah. So, yeah, the cancer is a very heterogeneous disease. Not only one can do it. So sometimes we try to say we can regroup the tumor, say not based on the organ, but based on their mechanism to distinguish them. Then the treatment for the target therapy, then we based on their the mechanism is say they belong to both tumors, say lung tumor and the prostate tumor have p53 mutation, right? So whether we can target to the p53 based on this common mechanism, use the same drug for treatment, but not based on the different of cancer origin. Okay. So there are a lot of possibilities, but we would try the best, continue on the journey of the research. Any question? Yeah. Cancer is transferable in if a person has a cancer and the cancer probe DNA, cancer associated DNA, is transferable to their offspring. Mm-hmm. So the cancer cell, when they divide, they continue to be a cancer cell. Yes, right? okay. So it's a continuum. So that is, yes, it's a heritable. Heritable. So Yeah. how it will transfer, the cancer cells are in somatal cells, okay? So the transferable genes are stored in germ cells. So germ cells are only transferable to the offspring during the fertilization. So what probe of the cancer cells are in germ cells are heredited to other offspring of a person. Like if anyone has a cancer, so in their ancestry, if anyone has a cancer and they're transferable in offspring in a recessive genes or a dominant genes in a future offspring, how it is decided to these genes are transferable to in offspring? So how the cancer cell decide what gene to transfer? Yeah. So that means cancer cell just they are different from. Okay, so I think you are maybe talking about the regular cell versus say how we call the egg and the sperm, that kind of gene regulation. Okay, no, it's different. Cancer cell just divide. Okay, so every single cell, suppose every single daughter cell will have the same DNA from the mother cell. So it's different from the fertilized egg. When they divide, they will segregate their DNA, right? They will divide the chromosome. So that's what the next generation, say, it could be a boy or it could be a girl, even unless they are the twin. Otherwise, they are different in the say phenotype. Okay, so it's different. So the cancer cells just divide by themselves. They do not through that kind of fertilization or nothing. The information of DNA that having a ontological impact on patient. So that particular DNA memory is stored in chromosome, and that chromosome is transferred to other offspring. Yeah, because if it's an oncogene amplified or it's a tumor suppression inhibited, so in the next generation, I mean, their daughter cell will have inherit the same problem. Then that will continue as an oncogene, as a cancer cell, right? Because their DNA it contains either the amplified oncogene or contain a mutated tumor suppressor gene. So their daughter cell will continue the same DNA. They will not they cannot repair. They cannot. Okay, so that's the reason it's heritable, because just very simple. They divide it. That's all. Yeah. Okay. Yeah. Sure. In case of leukemia, blood cancer, blood may transfer to the other organ also. So why it not cause on cancer to other organs? One more time. If patient have leukemia case, So patient has leukemia. blood is transferred to the every organs. So why it not affect the cause tumor to other organs? Oh, why the leukemia, for example, why that? So, as I just mentioned, the leukemia cells, the same day leukemia, they just divided by themselves. So they don't.
So yes, so your question is whether a cancer cell can transfer their cancer DNA to a normal cell, become a cancer cell. It's possible. So that's why whether the exosome, we are talking how the exosome do it, they might actually affect the normal cell. Say that if a person is suffering from leukemia, Uh-huh. can patient have chance that it may also cause nervous means brain cancer? Oh, it's a very good question. Whether there's a chance a say leukemia patient also have a chance to have a brain tumor. Yes. No, that's a very good question. Whether there's a possibility, it is possible, but whether they're from the same, whether the brain tumor, yes, they do have patient has multi-cancer. Okay, we need to understand that. We do see patients have multi-cancers within the same patient. We do. They do have case. But whether they are from the same cancer origin, we don't know. Yeah, we don't know. Whether, for example, as you mentioned, if the same patient has say leukemia and a breast cancer, whether the breast cancer was really induced by the leukemia, I don't know. I cannot tell you whether that's the case. I think we need to have more study to show that. But there's a possibility that cancer cell will influence the adjacent normal cell to support their proliferation, to support their invasion. Yes, they will affect it. Chemotherapy, Uh-huh. in that case, they will be provided for curing both the cancer or what? So whether chemotherapy will kill both cancer cell and then the adjacent cell? Anyone is suffering from both means breast cancer and leukemia, Uh-huh. they have provided chemotherapy which can cure both the cancer. Okay, so it's a good question. If a patient has two cancer, whether one treatment could hit both of them. Okay, so it depends how the treatment. It all depends. Because of my research, I deal with a lot of deal with a physician and I deal with a patient. So, for example, we do identify one compound. I think you guys may know it, called the morning after pill. Morning after pill. You know what is that? Mifepristone, morning after pill, is a pregnant, prevent pregnant. Okay, morning after pill. So we have one patient have meningioma and the prostate cancer together. So the oncologist, who I collaborate with, he actually was on clinical trial for meningioma using the we call the mifepristone, or we call the RU486 to treat meningioma. But then when they treat the patient with RU486, the meningioma did not, he used chemotherapy to treat the meningioma, but the meningioma did not shrink. But then we come by idea, I talked with him, I said, why not we choose RU486, the morning after pill that we discussed. Then bingo, the RU486 inhibit the prostate cancer. But the meningioma was a little bit of shrink, but not so distinct as the prostate cancer. Yeah, we did see that. So we actually published a paper. We actually have some clinical case. So Did you do research on that case? Means you find this case in whether they are from the same cell, no, we did not. Whether they are from the same cell, whether that's a neuroblastoma versus prostate cancer are from the same origin, the same, either from one of them or vice versa, we did not. Okay, so at that time, to my collaborator, medical oncologist, the most important to treat the patient. Then to me, actually, my interest was going to the therapy, whether we can identify the new compound. But it's very interesting. RU486
the morning after pill can suppress some prostate cancer. Okay, sorry, I cannot tell you. So yes, we do have one patient, for example, their patient have more than 2, 3 or 5 cancer. So why is happening that way? Why some patient have multi-cancer in the same patient? Why does this such a poor guy? Why it happen? So it's one possibility, for example, is the PUT3 mutation or the RB mutation. Then PUT3 and RB are essentially exist in all the normal cells. If their mutation from their parents, he inherited, there's a possibility to get multi-cancer. So whether their treatment could be the same, use the same prescription. That's what, as I mentioned, that's what a group of the scientists try to see whether that is the case. Say if there is the same mutation, even different cancer, whether we can treat it the same. Okay, whether. So that I mentioned is ovarian cancer, breast cancer, we have HER2 amplified, right? So we can give them Herceptin. When we identify, we quickly give them Herceptin. But turn out breast cancer is better, shows much better efficacy, but not ovarian cancer. So why? Why? Yeah. So that's what people are trying to figure out why. Yeah. It's the same molecule. And the same in the same, one is ovarian cancer, one is breast cancer. Both of them are related to the estrogen. But why one treatment is much better than the other one? Okay, I think Sorry to interrupt. Oh no, We have already approached lunchtime. No. From the different cell, there is different kind of mutation. Let's get back discuss. Yeah. We have already approached lunchtime. Okay. So we'll take a break. Sorry about that. Okay, we can discuss. Yeah, after the lunch, we have. Yes. Yeah. Sorry. Okay. Yeah. Food packet आ चुका है आप लोग. Yeah. So please come. Yeah.
Okay. Is everything done? Is ready? Okay. Okay. Do we have any question in the last hour discussion? Any question? Or we can discuss after this session. We can put together for discussion too. Any question? Okay, so now for this hour we are going to talk about the signal and the cancer targeting therapy. Okay, how we are going to. So the first we are discuss about the apoptosis. Yeah, we did talking about the apoptosis. We're talking about the necrosis. What the difference between the two? So necrosis, the definition is the lysis of the cell membrane. Yeah, the lysis of the cell membrane. So that leads to the release of the cell content to the extracellular space. And inflammatory response are often occur in the bacteria or virus infection. So the necrosis is some sort of lysis of the cell membrane. But the apoptosis is known as a programmed cell death. Okay. So the classical term for apoptosis is programmed cell death. So that means they follow a program, then the cell death. So there are three major. So the programmed cell death is actually the most significant, the most obvious is the DNA letters. When we do run the gel, the DNA use the cell programmed cell death, the genomic DNA will become like the letters, okay, and very equally distribute. So we know that is a cell death, a programmed cell death. But that was a classical term, but now more and more we call it as apoptosis. But classical we call the programmed cell death. But doesn't matter how, they have a following a sequence, they have a pathway. So there are three major apoptotic pathway. Yeah, three major ones. One is the p53 induced apoptosis. That's what we mentioned. The p53 is a tumor suppressor gene, and they will induce apoptosis. Then the second one is a extrinsic path. We call the death receptor pathway. Then the third one is the mitochondrial pathway, intrinsic and the extrinsic. So if the mitochondria is inside the cell, we call the intrinsic pathway. Then if the receptor, death receptor mediate, then it's extrinsic, okay? Then also a cell death is autophage. It's another autophage. So this is a diagram, it's a figure to show intrinsic, or intrinsic pathway, cell death pathway could be induced by TNF alpha or phase death receptor, or even the growth factor withdrawal. So when there's no growth factor, then the cell will go to apoptosis too. Or when the DNA damage too much, the p53 cannot function properly for the DNA repair it. They can also go to apoptosis. So there are three pathways. Then they'll activate the caspase. Then they will phagocytosis, go to the cell death pathway. So this is, we know the cell death. Okay, so again, it's necrosis. Essentially, yes, some people try to propose there could be a mechanism involved with a signal pathway, but it's just more random. Okay, it's your membrane lysis, then they will go to the cell death, then it's a necrosis phenotype. Then apoptosis for sure is a signal pathway, which one pathway it goes. Then the autophage system. Okay, so there are different kind of the programmed cell death. So again, this is shows how it is a receptor intrinsic and the mitochondria intrinsic. So outside and inside, how they interact to this one apoptotic pathway. How the interaction. So for example, if this is cell death ligand, TNF alpha, for example, then they will interact with the receptor, then go through the death receptor pathway
the DISC protease procaspase or procaspase A or cytoplasmic adapter protein, then they will activate caspase 8, then go to the caspase cascade system. So this is go to cell apoptosis. If through the mitochondria, through the BCL family, so the bug and the bugs, then or the BCL actually inhibit cell death pathway. Okay, but the bug and the bug. So the BCL family actually divide into two groups. One group pro apoptosis, another group suppress apoptosis, reduce apoptosis. So BCL2 is a classical known inhibit apoptosis. Then the bug or bugs is apoptotic pathway. So there might be response due to the growth factor withdrawal or the DNA damage too much or the cell cycle abnormality. So in the checkpoint, if they find out the protein biosynthesis, the duplication of the material is not complete, they might go to the cell death, okay, pathway. So this all goes through the caspase. This pathway goes to caspase 9. So caspase A activation is intrinsic pathway. Caspase 9 is intrinsic pathway. So these are very different. They will not mix up, okay. Outside coming in always through A. Internal mitochondria always through caspase 9. But nevertheless, it's caspase cascade. So they do it, yeah, okay. So again, the DNA letters is a really hallmark of apoptosis. So that's what, as I say, classically we call DNA letters. DNA letters. So this will show you more detail about mitochondria intrinsic pathway. So this is actually the apoptosis initially was starting from the mitochondria study. So the most how we know is apoptosis actually at the beginning is a cytochrome C release. When there's cytochrome C release, that is very good indication. Indicator say this is apoptosis. Okay. So the person, the scientist actually discover, make this such an observation, says cytochrome C release from mitochondria to cytosol is a marker of apoptosis. Actually was quickly elected as academic in the academic institute. So become a U.S. academician. It's the highest level of a scientist. The Nobel Prize award, that's a different story, but as a scientist, they can be elected in the academician. That is a very great honor for the science research, for the scientific approach. So in this pathway, the BCL2 and the BCL-XL, they inhibit pore formation by binding to with the bugs and the bug. So BCL2 and the BCL-XL are the anti-apoptotic. Then the bugs and the bug, they actually are the pro-apoptotic. Okay. So as I said, there are two major groups. One is pro-apoptotic, one is anti-apoptotic. So in here, say the nuclear DNA damage, say it's a AIF or the endo G. Then we induce the nuclear DNA damage, then they will come to the mitochondria, the bug, then anti-apoptotic come in, or say, so this is how they interact in this pathway. So the mitochondria intrinsic pathway is a caspase 9. You can see the cytochrome C release from cytosol, from mitochondria into the cytosol. Yeah, so it's a marker for the apoptosis, in addition to the DNA. Okay. So for the cancer cell treatment, for example, then we can try to see whether we can induce apoptosis. So this is one approach we can treat the cancer cell.
So this mention shows the p53 mediate induced apoptosis. Yeah. So the active p53 okay, so the p53, when there is a DNA damage, the kinase activated, then will quickly induce p53. Okay, induce p53. Then they can try to go to the cell repair. If cannot, they go to cell death. Then p53 actually inhibited by the MDM2, and MDM2 by ALF. So ALF activate p53 indirectly. And then this one actually is proto-oncogene. Okay, so this is how they interact on my cycle. So under normal condition, the p53 concentration kept low by the MDM2. The MDM2 inhibited. So as we know that p53, the wild type p53 in the normal cell, the half-life only 20-30 minutes, very short. They synthesize and gone. So in a normal cell, if we perform immunostaining, try to observe the p53, it's very difficult. It's a very low level. But in the cancer cell, it's going up, so we can stain it we can see it very easily. So p53 elevation in the cell, we actually also indication say, yeah, it's a p53 mutation and it's a cancer cell. Okay. So MDM2 actually promote ubiquitination of p53 and degraded by proteasome. So the ubiquitination will result into the proteasome degradation. So this is all the just give you a detailed statement how the interaction. So essentially represent in these figures. We just describe it. So the key point in here: increased p53 activity leads to cell cycle arrest or apoptosis. Because there is DNA, so p53 essentially responds to the DNA damage. So when there's a DNA damage, it got to be repaired before the cell cycle. So then p53 is responsible for that. Okay, so p53 going up. Then when it's going up, you can repair it. But when during the repairing, also cell cycle arrest. But you cannot repair, then go to apoptosis. They need to sacrifice that cell. Okay. Yeah. So upon the DNA damage, p53 activated so arrest the cell cycle. Then that can judge whether the damaged cell can be replaced, can be repaired or apoptosis. Then the p53 mutation, as we mentioned in the last hour, is they lost the regulation. But not only lost the regulation, the p53 mutant actually can compete with the wild type protein. So even the cell has a wild type protein to do the job, but because of the mutant, the p53 compete out. So turn out the wild type cannot function and become an oncogenic activity. Yeah, so that's what p53 is. Can be the positive tumor suppressor or could be an oncogenic protein. So either way. Okay. Yeah, so this is integration of the signal transduction pathway in the growth with apoptosis. So just as again, as a reference, we're talking about the ROS oncogene is actually involved in the tyrosine phosphorylation. So it's required GTP for activation. So we call this is small g protein. Then the ROS can go through the ROF downstream and the MAPK pathway, then go to phosphorylation. Okay. Then or they can through the PI3K go to the AKT pathway. Then that will go to phosphorylate the bed. So the BCL2 can phosphorylate, have a phosphorylation loss from the mitochondrial membrane. So
this is the cell growth, and then this apoptosis, then how the two interact in this pathway. So in here, we actually, I give you all these details, right? A lot of figures just for your reference. Even they may not be the updated one, but the major frame, the major pathway is still exists, is still correct. Okay, just a detail. During the rest of the research may be more detailed, but this is a major pathway, how they interact. Any question? Are we okay? Yeah. Okay, so this we just briefly talking about the apoptosis pathway, how we regulate, and how the cell death can be through, say, the necrosis, apoptosis, something about that. And then apoptosis can be through 3 different pathways, not only one. So that is what we try to do is we can use, if we can induce apoptosis pathway, we can kill the cancer cell. So all the way, all the different approach is try to kill the cancer cell to save patients' life. Okay, those really our ultimate goal. So this is, yeah. Cell membrane, there is a biomolecule called phosphatidylserine. Mm-hmm. And there is an enzyme called lipase, which basically sends the phosphatidylserine to the outer leaflet of the cell membrane, and that acts as a cell degradation signal. So could we target or upregulate that lipase enzyme to kill cancer cells? Yes, it's all possible. You can identify a target molecule that involves in growth regulation or cell death. If it's a cell death signal, cell death molecule, we can try to target it to induce it, elevate its expression. But if that is a growth marker, then we can try to target to inhibit it. Okay, we can put it this way. So as long as we can identify a marker or a target protein, then that's what we can do to do the treatment. So that's what we call the targeting therapy. In that will somehow reduce the adverse effect. But in reality, the normal cell, for example, also has both biomarker. They also has a biomarker. But how can we reduce the side effects and enhance the specificity? That is actually the point. Yeah. So they do have different approach. Like for example, use antibody targeting. So the specific antibody will recognize the specific marker and for the treatment, for example. Like we mentioned about Herceptin, for example. That is a marker. It's really a good targeting to the ERB2. But unfortunately, as I say, is the same hormone-sensitive cancer cell, breast cancer cell versus ovarian cancer cell, and we target to the same molecule, but turn out the efficacy is different. Yeah, turn out the efficacy is different. So how can we do? So that is what there's actually, as I mentioned, is their approach is try to say, if they have the similar molecule change, say similar ERB2 amplification, whether we can use the same targeting, like Herceptin targeting to ERB2 to inhibit the ovarian cancer cell. But turns out seems not the case. Okay, turns out seems not the case. So we need to come back to the drawing board to identify the new stuff, the new targeting or the new approach to do it. So that's what the rest of the allowed us say the immunotherapy or the cell cycle inhibitor combination. So on and so that's what all the purpose is going to kill the cancer cell. So this is a figure, it's an old figure, yes, talking about how we can control the cell growth and the malignancy. Okay, so this shows the uncontrolled cell proliferation and the malignancy means a cancer cell proliferation. So then if we can identify the pathway, then we can target them for the treatment. So the chemicals, virus, for example, they can induce mutation of the DNA, or they can alter the gene expression or the steroid hormone growth factor.
they can also they may do the same. And in the breast cancer cell, the BRCA1, BRCA2 are two tumor suppressor genes. They actually involved in the DNA synthesis and the repair, the BRCA1 and the BRCA2. So they are the inherited mutation. It's about 10% in the breast cancer cell, and also in the prostate cancer. They have BRCA1, BRCA2 mutation. But interesting is, yes, in the in the breast cancer, it's much clearer for their function. Then, on contrast, actually, the function in prostate cancer is much less known. It's much less clear. So the same protein is mutation. One is very clearly clarified what is going on, but not the other cell. Okay, so this is a difficulty they had in the prostate cancer, in the cancer therapy in general speaking. Yeah, even the same molecule in here. So one is what we're talking about, say the ERV2, the HER2 application. So this is a pathway how they can alter the gene expression. They can have proto-oncogene become activated to oncogene, or they can inhibit the PT3 or RB. Then all put them together, they can become a cancer cell, right? So we know the step here, step by step. Then we can develop the treatment to hit one or the other, okay, for the treatment. So that's what is going on. So this is a classical, this is a basic principle in developing chemotherapy. So we know cancer cells grow faster. So the basic idea is cancer cells grow fast. They keep growing. So they require our reagent. So then by that, we can actually target it to the purine synthesis or pyrimidine synthesis. So we know that the pathway here from ribonucleotide to the deoxyribonucleotide to the DNA, RNA. So we know this pathway. Then we have different chemical compounds for the inhibition for the treatment. For example, the 5-fluorouracil. This has been available for maybe 40 years. It's still using because it really can inhibit the cancer cell, but not all the cancer cells actually respond to it. So the efficacy is not very strong. So for example here, methotrexate is inhibit the purine biosynthesis, okay? So the methotrexate is a homolog to one of essential component, one of essential factor. So then can inhibit the purine biosynthesis. Even now, actually, this is a taxane. Okay, taxane. It's very, so vinca alkaloid, this actually is a component, vinca. In one kind of flower, very beautiful flower. It contains the vinca alkaloid and kill the cancer cell. Okay, yeah, so you know which one cell, right? It's very beautiful. The leaves very green, shiny, and the flower was quite pink. Yeah, very beautiful. You can see that a lot of places. So they contain the vinca alkaloid for cancer treatment. Then taxane, okay, so this actually also from the plant, okay. Then it's actually inhibit the cell division, inhibit the microtubule cell division. And this one is actually still, the taxane is still very actively using. It's one of very active chemo reagent in cancer treatment. So for example, I'll give an example here. This is a chemo reagent. So folic acid essentially is required. So then they synthesize the compound have analog to folic acid, aminopeptidine, okay, or the two compounds, and then they can be used, called the methotrexate. They have similar structure to folic acid, then they can be used because after they can replace, compete with the folic acid. Folic acid is a cofactor, so it's involved in the DNA nucleic acid metabolism. So then if these two molecules actually compete out the folic acid, then the DNA
nucleic acid biosynthesis will be blocked. Then the cancer cell grow, divide so rapidly, they require high amount of the nucleotide. Then that will be blocked. The cell will stay. Okay, so this classical example, methotrexate to similar structure to folic acid. So this compound, this inhibitor, for example, is the same for many, many years in the clinical usage and still continue going on. So Herceptin, yeah, it's one. So it's really targeting to the breast and ovarian cancer cell when they overexpress HER2. Okay. So this is antibody, and then is a humanized antibody to HER2, and they can be used for targeting therapy and approved. It's actually authorized. It's FDA approval. It's actually clinical usage now. So I said, when they got the tissue, they try to see how many copies of HER2 in the tissue. You amplify more than normal, then they will quickly treat the patient with Herceptin, because when the HER2 is amplified, the cancer becomes very aggressive. They need to be treated very, very aggressive. So that Herceptin is one of the classical examples targeting to the oncogenic protein in the treatment. But if the HER2 is not amplified, Herceptin cannot recognize it. Even the cell has HER2, HER2. But if this is not amplified, Herceptin has no efficacy. Okay, only when it's amplified, Herceptin has efficacy. So this is EGFR inhibitor. There are so many different kind of EGFR inhibitor targeting to the EGFR. So why they have so many different inhibitors? Because each company, they try to develop their own small inhibitor, right? Target to EGFR. We know EGFR is important. So each company, there is a different kind of the cell line used as their model. And it turned out each cancer cell line had different mutation. So then they come out with all different kind of targeted molecule. Okay, so this is the reason they use a different cell line. So for example, this non-small cell cancer cell, okay, the head and neck cancer cell, or the breast GI cancer. So this compound may be useful, but not really good efficacy. So for this one inhibitor, so they do list different inhibitor. Then the company, they definitely use their own cell line, and it turns out the different cell line have different mutation, then the different inhibitor come out. Yeah. So that is the interesting part. But it's good is different cancer, they have different mutation. They require different inhibitor. So to be honest with you, I think this is one. This one inhibitor actually did not have much efficacy to treat cancer patient in US patient. So the company almost tried to abandon it. But turned out this mutation appearing a lot in the cancer patient in Taiwan. So then this drug cannot be used in US because the patient don't have this mutation. But a lot of patients in Taiwan have this mutation. So the drug becomes very favorable in Taiwan, but not in US. So this one kind of, we can say one kind of cancer disparity, right? One group patient, they have this kind of mutation, but not another group. So then when the company developed this small compound, they actually did not know that happened. They have their cell line and they use it and it turned out. Okay. So this is an example how the small molecule inhibitor to the EGR inhibitor. So they have a different combination. They try to find out which one combination could show efficacy.
So for example, the summary from all these complicated studies, non or ex-smoker with EGFR mutation, they can have high response dose. Okay, so this is a small molecule is a gefitinamide or gefitinamide or called erotinin something. So these two compounds, they show good response to ex-smoker or non-smoker, but they are not good to other patient population. If there's no EGFR mutation, wild type EGFR, then these two compounds have no efficacy. So that is one type, one example of targeting therapy, targeting to a patient, they have EGFR mutation. So then what they are doing is, in the clinical, is when they have patient identified after the surgery, they got the patient specimen, they go to do the analysis. They do the protein sequence or DNA sequence to make sure, to check, determine what is the mutation. And then they can use the corresponding inhibitor for treatment, for this patient treatment. Okay, so they need to do a lot of sequencing, either the DNA or the protein, depending on different molecules. So this is, this actually tell you is what the targeted therapy are doing. They targeting only the EGFR mutant one, but not the wild type EGFR. So we are talking about say the pathway. Now we know the pathway, and we can identify the small molecule targeting to the specific pathway what we like for the chemotherapy. So for example, this is the ROS, MEK, ERK, go to transcriptional factor. So we mentioned is the ROS is the first human oncology mean clone, and has 3 isoforms, KH and N. They are actually represent about 30% of the human cancer. Okay, about 30%. And it is the first human oncology mean clone. So what the importance is, we are going to see what it is going on, the target to the ROS for chemotherapy. So this is in the melanoma, okay, melanoma, skin cancer melanoma. So this is a small molecule called PLX4032. When there is a BRAF, okay, BRAF mutation, okay, have BRAF mutation, then the compound has very powerful tumor suppression, very, very powerful. But turn out, we find a subgroup of patients, they do this compound, this small compound, did not have growth inhibition, but turn out it's growth stimulation. Turn out growth stimulation. Yeah. So if they have, so this is growth, cell growth. So if this is a ROS mutation, okay, have a ROS mutation, then they go to the growth stimulation. So the ROS, okay. So this is a ROS. So if there's a ROS mutation, then this become a growth stimulation. But when this compound was used at the beginning, it's very, very powerful. And I should say I'm very proud of as a reviewer for this small compound in the clinical trial. Yeah, actually I serve as a reviewer for National Cancer Institute. Then we reviewed this proposal. I was assigned to be the primary reviewer for this proposal. And at the time when you review a proposal or review a manuscript, you sometimes have that kind of hunch, okay, that kind of feeling. It works or it doesn't work. So at the time, I just have a very interesting feeling is this compound might have very high efficacy toward the melanoma cell. It just has that kind of very strong direct hint to me.
So I was able to convince my partner. Usually one proposal reviewed by 3 reviewers. So I was able to present what I observed, and then turned out my 2 partners actually also concur with me. So when we funded for 5-year study, say to test this small compound for melanoma treatment. So the proposal was for phase 1 trial. So that means phase 1 is to see whether there's efficacy, okay, or toxicity, the toxicity. So the phase 1 is the toxicity of the compound. So they use a different dose and treat the patient to see whether there's any adverse effect. And incredibly, even the low dose they use, all the tumor just shrink immediately. Immediately they just shrink within a month. So they quickly move from phase 1 study to the phase 2/phase 3. So in clinical trial, we have totally 4 phases. Then phase 1 is the toxicity, phase 2 is the dosage response, phase 3 is the institutional study, and the phase 4 is a multi-phase, multi-institutional study. Okay, so then turn out this compound can quickly suppress melanoma, but unfortunately, as we say, cancer cell very quickly refractory to the treatment. So between 6 and 1 year, the melanoma come back. So then we need to have secondary treatment, second line of the treatment to those refractory ones, because if they resistant to this compound, then the compound, we cannot treat them anymore. So we need to find second line of the treatment. But then not only that, at the same time, they find actually one subgroup of patients become growth stimulation, but not tumor suppression. So turn out the identified mechanism is a ROS mutation. If there's a ROS mutation, the treatment becomes growth stimulation. So that complicates the treatment. We cannot only just determine the BRAF, we need to see the ROS status at the same time. So targeted therapy then become very expensive financially, become a burden. Okay, so that, but it's still a really nice, it really can inhibit most of the melanoma patients rapidly. Yeah, even they come back after six months or so, but still you can really release the patient from that kind of suffering immediately. So this example I try to present is how in the cancer, prostate cancer, this I know the best, okay? How we develop the treatment targeting at the different step of the tumor, of the, say, growth regulation. Because from hypothalamus, they will come with GNH, okay, GNRH, okay? So it's just, then they have LH, FSH. They will stimulate the secretory AMP, and the secretory AMP, we're talking about the secretory AMP actually activate the steroid hormone biosynthesis, right? By activate the cleavage of the cholesterol side chain. Then they can, so then there's a testosterone biosynthesis, so on and so on. So then now we can actually, they do have developed inhibitor, agonist or antagonist to LH, RH for the treatment. But theoretically, antagonist should do the function to inhibit it. But turn out, agonist has a better efficacy than antagonist. Okay, so LH stimulates cell growth. So suppose we should use antagonist to inhibit it, right? But then, yes, antagonist can do the function, inhibit the cancer cell. But agonist actually have better efficacy. So now in clinically, both antagonist and agonist, both of them are actually used. Okay, even it's a very strange phenomena, but shows efficacy. That's it. Okay.
Then after that, this growth inhibitor, then they try to develop different antibody or small molecule to target to the growth factor, like ERB2 or EGR inhibitor. But so far, not very successful. Or we can have inhibitor to androgen biosynthesis. So abiraterone or say the ketoconazole, and all three compounds, they can actually inhibit the cholesterol androgen biosynthesis. Yes, we can see some efforts, but it's not very powerful. So in clinical, we don't use much. Then, for example, the SHP90, they interact with the androgen receptor. So we can also target the He-shell protein SHP90 and the cofactor, see whether we can inhibit AR activity. So this is actually has been tried this approach for the last 20 years. I will remember about 20 years now, but it's still a difficult approach. Then one is androgen T to DHT. As I mentioned, T, the function mainly internal, for internal function. DHT will be for external function. So then it's required the enzyme 5-alpha reductase inhibitor. And turn out, yes, the 5-alpha reductase inhibitor has some efficacy, but it's limited, but do have efficacy. Then from testosterone going down to the estrogen, then require the enzyme called aromatase inhibitor. Then we mentioned there's actually compound can inhibit aromatase inhibitor in the orange juice. Okay, so this can inhibit here, can suppress estrogen, suppress breast cancer cell, or the tamoxifen is also anti-estrogen. So the anti-androgen, now we have the flutamide, casodex, and the lutamide, and so on and so on. So there are many compounds. There are many compounds can target to the androgen function. And similar, we have many compounds targeting to estrogen. So this is for the sequence. We know the beginning and the end to the end, the end product. Then how can we target step by step for the treatment? Okay, so this is in the cancer therapy. Yeah, so the first is Andrew Shari, actually, he discovered the GNRH. So he received the Nobel Prize in 1979. Then Charles Huggins actually received a Nobel Prize in 1966 because he developed androgen deprivation therapy for prostate cancer treatment. So if we know androgen, as we agree, androgen required for prostate cancer, then androgen deprivation, reduced androgen, can be used for the prostate cancer therapy. And indeed, that is the case. So usually, the androgen deprivation therapy could reduce the cancer burden for 3 to 5 years. Usually for 3 to 5 years. Then patient will feel much better, have a better quality of life. Okay, now back to the first slide. Okay, we're talking about the treatment. The biochemical carcinogenesis, multi-pathway in chemical carcinogen in the carcinogenesis. And we're talking about the heterogeneity of the cancer cells. There's a multi-foci within each cancer region, multi-foci. In prostate, for example, they can have multi up to 10. Then individual variation in each patient. Patient A will different from patient B, everyone different. So not only the cancer, for example, even say we have for the pain, the fever, we have the Tylenol, right? We have Advil, right? And we have what? Others. There are 2, 3 at least different compounds. They do the same job, same period. But turn out why they can also they can actually solve very well. Because some patients more sensitive to Tylenol, some patients more sensitive to Advil. Okay, so very interesting. For example, in my family, my daughter prefer Advil, my son prefer Tylenol. To me, I can have both. So where the segregation of the gene, I don't know. But when they were born, I think they have this kind of, they obtain
they express the gene and then they have different expression. One is dominant, one is not the case. One may not express. So then my daughter son prefer use other beer. My son prefer Turner. So that is the case. So it's an individual variation. Yeah, very simple, individual. So both of the prescription actually say are very good. Then the ratio disparity within versus in between. So the ratio, yeah. So even say the Caucasian versus African American, but even African American depend on which part of Africa you came from. They are different too. Okay, so it's really not the racial disparity also. They are the same African American people. If they're coming from say eastern part or they're coming from southern part, their response different. Yeah, their response just different. So all this heterogeneity we need to consider. Then we can profiling of the signal transduction. We can have targeting therapy. You can either we use a single therapy or we can use combination therapy. Okay, so the single therapy is very tough now. Usually now they use a combination therapy. But when you do the combination therapy, you got to be very careful with the toxicity. So for example, some prescription drug you can combine for the usage, but some of them you cannot. So if you add the two together, it might have very strong side effect. So my question to you is, can cancer cell be cured? Can cancer cell be cured? Can we cure the cancer cell? So, okay. Yeah, so because of the combination therapy, the heterogeneity of the cancer cell, then actually they try to identify the immune regulatory, yeah, the PD-1 or this immune inhibitor, okay, inhibitor to immune response. And then this year, actually they award to 3 persons, they identify the regulatory cell, immune cell. Yeah, this year, 3 persons got it. Okay, so the 2018 award to the T cell protein, T cell inhibitor. So can we cure the cancer cell? Again, can we? Can we do it? Yes? No? Come on, keep hope. We can. Okay, we need to have hope. We could, but it's tough. For solid tumor, we can, if we can identify the tumor in the early stage for the solid tumor, we can have surgery. I do prefer surgery. Just remove it much easier. But if for hemolytic hematoma cancer, for example, like leukemia we were talking earlier, then some treatment, actually some patients do respond very well, but not other patients. So for blood cancer, sometimes we require stem cell transfer. Okay, we require stem cell transfer, but then the patient will be able to survive normally for a long time. Okay, but of course, the stem cell transfer is a very tough challenge. So one thing is, if we are unable to cure the cancer cell immediately, then we have so many different generations of prescription. One what we can do is we can hit it with treat the patient with first generation prescription. Then when the patient reflect to the first generation, then we use a second generation, or we can use third generation. So by this, we can improve the quality of patient and also prolong their lifespan. So we may not be able to do it. Be honest with you, it's still a really big challenge. The chemo treatment, okay, it doesn't matter. All the treatment they do reflect to the initial treatment. They do. They will lose efficacy.
So one way is we keep changing or we have different combination to improve the efficacy, and then we can prolong the lifespan of the patient and improve their quality of life. So that's what we are doing. So okay, so much for this the question. Any question? Any question? How do you think? Yeah, it's a big challenge to understand what it is, what the cancer cell, because they keep changing. So now even we're talking about the stem cell, right? And then now the current concept is cancer initiation cell. So it means it's similar to the normal stem cell. They are the one initiate the cancer cell. And then not only that, the cancer cell they will reverse. Some cancer cell actually will reverse back to the cancer initiation cell or cancer stem cell. I don't like the term cancer stem cell. I do prefer cancer initiation cell. But doesn't matter how, the cancer cell we know is very flexible, very plastic. They can change it to different phenotype. So some of them will actually reverse to the original stem cell type. And then they will resist to the chemotherapy. Okay, they will resist to chemotherapy. So then one way is how can we prevent that reversion? How can we do it? Why, if we know how they reverse from say mature cancer cell back to the cancer stem cell or cancer initiation cell, then we will be able to, the chemotherapy will be more, say, efficacious for the treatment. So there's a different pathway, different approach that we try to improve the treatment. So that's what I mean is for cancer treatment, we have different generation of antibody or different aspect. Then we can treat with the patient with them at a different time point where it's necessary. We can improve their life quality, prolong their life. So yeah, the patient life quality is a very important too, and not only the total the lifespan. Okay, so all these efforts for many years, so many scientists, that's what we are doing, working on it. So before you understand the cancer cell, you need to know a normal cell. So cancer research is very challenging. That is the case. You need to know the normal. You got to understand what is the normal function. Then how they change. So that's the reason cancer research is very, very competitive, very, very challenging. And you need to understand very diverse background. You need to know the biochemistry, the signal transduction pathway, the steroid hormone, so on and so. We need to understand that bit of chemistry, that bit of biology. So we can develop develop the drug. We can synthesize the compound. We have some idea how we can do the pathway analysis. Okay. No more question. Okay, I think we are done today. So my last hour lecture will be tomorrow morning, I think. I will give you an example how is the integration of the pathway, including the steroid hormone, the free radical, and even the tyrosine phosphorylation. In our study, we can merge all the three into one, and even involve in the origin of, we call the functional genomic or the transcriptome research. Yeah, we will involve to analyze the gene expression, or now they call the transcriptomic, way back 20 years ago, just beginning of the life. So we can discuss that tomorrow morning briefly. Okay, thank you.